forces and forces of hate and divisiveness, which are growing everywhere. We cannot ignore them anymore. WhatsApp messages are bringing us messages of hate and propaganda rather than those of love and unity. What we hear in most media today, and even from those who are in power, our leaders who are in power today, is the same message of hate and divisiveness. In this context, we felt that it was important to initiate a dialogue, a discussion, and to start talking about and countering this whole process and these forces of hate, and start talking about love, about peace, about humanity, the values that Gandhiji, that Mahatma Gandhi espoused, his philosophy, and the same values that are central to our constitution and our country. Today's discussion is part of the Nafrat Chodo Samvidhan Bachao campaign. This is a campaign where civil society across the country has come together to take up this mantle, to take this issue forward, and across the country, hold yatras, come together, mobilize people, and give out the message of love and unity. I'm going to request Shabnam Hashmi of Anhat to talk to us briefly about this campaign. But before that, because we are joined by people also from across the country, I'm going to provide a very short translation simultaneously. आज हम जिस संदर्भ में मिल रहे हैं, हम जानते हैं कि किस तरह से नफरत के और जो बांटने वाले जो पूरे फोर्सेस हैं, उन्होंने ग्लोबली पूरे विश्व में और हमारे देश में तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से जमीन ले ली है और दे हैव टेकन रूट्स। और ऐसे में बहुत जरूरी है कि जब हम सब जगह, चाहे हम मीडिया में देखें, चाहे हम व्हाट्सएप देखें, अपने फोन देखें, अपने भाषण सुने नेताओं के, सब जगह पर जब आवाज नफरत और बंटवारे की हो रही हो, तो बहुत जरूरी है कि चर्चा की जाए और शुरू की जाए और बातचीत की जाए। मैत्री, प्रेम, एकता और हमारे जो संविधान के जो मूल्य हैं और जो गांधी जी के, हमारी फिलॉसफी है गांधी जी की जो दी हुई, उसके बारे में चर्चा की जाए। और इसी सब चीजों को लेकर आज की जो डिस्कशन है गांधी जयंती के अवसर पर, आज हम करेंगे वो चर्चा नफरत हटाओ संविधान बचाओ पर। और जो ये वेबिनार है आज भी और आने वाले समय में भी जो हम वेबिनार करेंगे, वो एक जो अभियान शुरू किया गया है उसके तहत है। उस अभियान का नाम है नफरत छोड़ो संविधान बचाओ, क्विट हेट सेव द कॉन्स्टिट्यूशन। और क्विट हेट क्यों? क्योंकि गांधी जी का जो हम भूल नहीं सकते हैं, उनका जो पूरा एक अभियान था कि क्विट इंडिया, तो उससे क्विट हेट, क्योंकि आज हम चाहते हैं कि नफरत हमारे देश को छोड़े। तो क्विट हेट और संविधान बचाओ, सेव द कॉन्स्टिट्यूशन का जो अभियान है, उसके तहत आज का वेबिनार है। और मैं अब रिक्वेस्ट करूंगी शबनम हाशमी को कि वो इस अभियान के बारे में संक्षिप्त में हमें बताएं। बहुत शुक्रिया अंजलि। जैसा अंजलि ने कहा कि नफरत छोड़ो संविधान बचाओ आंदोलन की आज पूरे हिंदुस्तान में शुरुआत हुई है। ये जो सोच है और इस पूरे आंदोलन के बारे में जो शुरुआत की, वो अनहद और सतर्क नागरिक संगठन ने तो नहीं की। मेधा पाटकर, सुनीलम, फिरोज, गुड्डी, एक पूरा जो ग्रुप है बहुत क्लोज मेधा जी के आसपास, उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की। इस पे बातचीत शुरू की थी, तकरीबन कई महीने हो गए उस पे। हम लोग उसमें काफी बाद में जुड़े हैं, लेकिन इस पूरे जो आंदोलन है उसका स्वरूप ये है कि देश के हर जिले के अंदर 75 किलोमीटर की यात्राएं की जाएंगी 2 अक्टूबर से लेके और 10 दिसंबर के बीच में।
और वो यात्राएं जो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं है, हर जगह के लोग जो उस जिले में संस्थाएं काम करती हैं, जो लोग रहते हैं, वो अपने अपने जिले में, ताकि हम ये यात्राओं की शुरुआत करेंगे। यात्रा 1 दिन की भी हो सकती है, 10 दिन की भी हो सकती है। मकसद ये है कि ऐसे समय में जब चारों तरफ से नफरत का हमला है और पूरा जो सो कॉल्ड नेशनल मीडिया है वो सिर्फ एक ही तरह की बात करता है, तो हम किस तरह से एक आम इंसान तक अपनी बात को पहुंचा सकें। तो नुक्कड़ नाटकों के जरिए, गानों के जरिए, खुद जाके लोगों से मिलने और बातचीत करने के जरिए और पर्चों के जरिए पूरे देश की अलग अलग जो जिले हैं उसमें ये यात्राएं आज से शुरू हो रही हैं, अलग अलग समय पे होंगी। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग जिस भी जिले में रहते हैं वहां अपने जैसे सोच रखने वाले, जो संविधान को बचाना चाहते हैं, जो नफरत से लड़ना चाहते हैं, उनके साथ मिलके इन यात्राओं की शुरुआत करें। मेन जो शुरुआत में बात हुई थी यात्राओं की हुई थी, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं हमारे जैसे जो बहुत ज्यादा शायद यात्राओं में पार्टिसिपेट ना कर पाए। तो हमने ये सोचा कि इन यात्राओं के दौरान जितने भी मुद्दे उठाए जा रहे हैं, नफरत से लड़ना, उसको खत्म करना और संविधान को बचाना, तो 2 बड़े मुद्दे हैं। लेकिन बाकी सारे मुद्दे, चाहे वो किसानों का मुद्दा है या महिलाओं के खिलाफ वायलेंस का मुद्दा है या जो पूरा हमारा अर्थव्यवस्था के जो हालात हैं या क्रोनी कैपिटलिज्म का मुद्दा है या लोकल जितने भी मुद्दे हैं, वो सारे ही मुद्दे इन यात्राओं के दौरान उठाए जाएंगे और उन पे अपनी बातचीत जो है लोगों तक पहुंचाई जाएगी। तो हम लोगों ने ये सोचा कि हम हर हफ्ते एक वेबिनार करेंगे और जितने मुद्दे इन यात्राओं के हैं उन मुद्दों में से हर हफ्ते एक एक मुद्दे पे लेके हम लोग वेबिनार के जरिए पूरे हिंदुस्तान में एक संदेश पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और सोशल मीडिया में भी बहुत सारे इस दौरान विजुअल्स बने हैं, बहुत सारे डिजाइनर्स ने पोस्टर्स बनाए हैं, वो भी हम साझा करेंगे सोशल मीडिया पे ताकि लोगों तक वो पहुंच सके। तो आप लोगों का इसे ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने देखा कि इनको जो इस पूरा अभियान को शुरू करने वाले भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, वो भी आगे आने वाले वेबिनार्स में हमारे साथ जुड़ेंगे, चाहे वो मेधा जी हो, सुनीलम हो, तुषार गांधी को आज जुड़ना था लेकिन बॉम्बे में एक रैली है इसलिए उन्होंने हमारे एक वीडियो मैसेज भेजा है। तो हर हफ्ते हम जो अभियान से जुड़े हुए लोग हैं उनको इस वेबिनार में शामिल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की तरह आप हर हफ्ते इसमें शामिल होते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शबनम, आपका बहुत बहुत। और हम लोग आज की चर्चा शुरू करेंगे और आज हमारे साथ एक बहुत ही वरिष्ठ लोगों का पैनल है जो बात रखेंगे इस मुद्दे पर और अलग अलग पहलू आगे लाएंगे कि किस तरीके से संविधान को बचाया जा सकता है, क्या करने की जरूरत है आगे जाते हुए। और जो हम महात्मा गांधी की जो फिलॉसफी है, जो उनका फलसफा था, उससे आज हम क्या सीख सकते हैं जिससे कि देश में वास्तव में अमन और विकास की बात हो सके, मैत्री की बात हो सके। सबसे पहले मैं एक छोटा सा जो वीडियो मैसेज है तुषार गांधी जी का, वो प्ले करना चाहते हैं हम लोग। तुषार गांधी जी लेखक तो हैं ही, वो साथ ही में महात्मा गांधी जी के प्रपौत्र भी हैं। तो द फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ वेरी वेरी accomplished, a very senior panel of speakers today who will be sharing their thoughts with us on various aspects of defeating hate and defending the Constitution today. I'm going to start with a video message from Tushar Gandhi, who is of course an author, but also the great grandson of Mahatma Gandhi. ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो सोच लेकर हम चल रहे हैं, नफरत छोड़ो और संविधान बचाओ, राष्ट्र को बचाओ, तो जब तक हम नफरत के खिलाफ एकजुट होके पुरजोश काम नहीं करेंगे तब तक बाकी सारी जो आइडेंटिटीज़ हैं हमारे मुल्क की, उनको बचाए रखना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए रावण के जो 10 सर है उनको काटने से कुछ नहीं होगा, आखिर में वो जो मूल बीज है उसी को अटैक करना होगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे संवाद
और ऐसे विचारों का हमारी के समाज में फैलाना बहुत अहम हो जाता है। और इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और फिर तहे दिल से आप सब से माफ़ी चाहता हूँ कि एक बार कबूल करने के बावजूद मुझे इस प्रायोजन में शारीक होने मेरे लिए असंभव हो गया। और कभी ज़रूर अगर मौका मिला तो ज़रूर जुड़ूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये कार्यक्रम इसी तरह बढ़ता रहे, ये सिलसिला बढ़ता रहे, क्योंकि अंग्रेज़ी में जैसे कहते हैं, there are miles to go before I sleep. The woods are dark and deep, and there are miles to go before I sleep, and there are miles to go before I sleep. तो तुषार गांधी जी ने कह दिया कि unless we come together to counter hate, we will not be able to save our other values, the principles, the values that we hold so dear in our country. So we need to come together to take steps to collectively fight the forces of hate. We are, like Shabnam said, we are going to be actively participating in the yatras across the country that happen as part of the Nafrat Chodo Samvidhan Bachao Abhiyan campaign. But we are also going to every week discuss the various aspects of peace, of how we want to save our constitution and how we can come together. So without further ado, I'm going to request Justice Lokur to please speak to us. Justice Lokur, as we all know, is a judge, is a former judge of the Supreme Court of India and is currently the judge of the Supreme Court of Fiji. And he has always spoken out. He has been a voice for people, for the values that the Constitution espouses, and has never, ever sort of stepped back from speaking the truth, from showing truth to power. So I'm very grateful, Justice Lokur, that you have joined us today. मैं स्वागत करती हूँ जस्टिस लोकुर का, और सबसे पहले मैं जस्टिस लोकुर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी बात रखें। जस्टिस लोकुर को हम सब जानते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय के, और अभी जो फिजी का उच्चतम न्यायालय है वो उसके भी जज हैं। और जस्टिस लोकुर न केवल कोर्ट में बल्कि कोर्ट के बाहर भी लोगों की आवाज बनते रहे हैं, संविधान के मूल्यों के लिए बात रखते रहे हैं। हमारी और जितने तमाम लोग हैं इस देश में जो चाहते हैं कि संवैधानिक जो मूल्य हैं वो सही तरीके से आगे बढ़ें और जमे रहें इस देश में, उनके लिए आवाज बने हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जस्टिस लोकुर। द फ्लोर इज योर्स फॉर द नेक्स्ट 15 minutes. Thank you, Anjali. I would like to speak a little bit about hate and hate speech, and the constitutional limits of hate speech and how the Supreme Court has interpreted hate speech and the laws. We all know that under our fundamental rights chapter of the Constitution, Article 19 gives all of us, everybody, the fundamental right to free speech and expression. And this has been expanded by the Supreme Court many years ago in the 1950s to freedom of the press. So it is not only that individuals have the freedom of speech and expression, but also newspapers, magazines, they also have the freedom of speech and expression. This is Article 19(1) of the Constitution, 19(1)(a). Now, Article 19(2) provides a limit to free speech. It is not that, because we have the fundamental right to free speech, anybody can say whatever he or she wants. There are certain limits. And we are really concerned with 2 or 3 aspects of this. One is about public order, because that is something which is being used a lot
to curb free speech. Not so much as sovereignty and integrity of India or the security of the state, but really public order is being mentioned as one of the reasons for curbing free speech. Also, another reason is to prevent incitement to an offense. So you can't say that, kill somebody. Although I think we have found in the recent past that to say goli maro seems to be quite all right. But that's one of the unfortunate aspects of all this. How do we define public order? The Supreme Court has again dealt with the issue of public order or the definition of public order long time back. In the 1960s, they had dealt with the issue of public order. So what the Supreme Court says is that you imagine three concentric circles. The largest circle is that of law and order, which is something that we all know. If there's a theft or if there's a murder or if there's some other crime, that's an issue of law and order. So that would be the larger circle. Within that, you have a smaller circle, which is public order. So just because something is a law and order issue, it does not mean it's a public order issue. So there are a few things which could fall within the category of public order, but not everything, although it may fall within the category of law and order. Then the third concentric circle is an even smaller circle, and that is security of state or sovereignty and integrity of India. So it is under this third category that you have something like the National Security Act, or during the emergency, you had the Maintenance of Internal Security Act, MISA. So that is a very narrow sort of a thing, where the sovereignty, integrity of India or the security of the state is involved. So public order really is not a law and order issue, but it is something much more than a law and order issue. Something like a riot, for example, would be a public order issue. Now, how has the Supreme Court actually dealt with the issue of hate speech, which we have found in the last couple of years, taking center stage, so to speak? Issues of free speech. Can I say something which will offend somebody else? What are the limits for my speech? What can the state do if I transgress that limit? What is that limit? These are issues that have been arising in the recent past. The first such case that was taken up by the Supreme Court was in 2004. In one sense, it was an important decision. What had happened in that case was that Praveen Togadia, who was known at that time for giving speeches which would incite or inflame communal passions, he had wanted to go to Karnataka to give some speeches. He was invited to Karnataka to give some speeches. And the district authorities prohibited his entry. They said, no, we cannot permit you to give speeches over here because of the background that you have been giving these communally inflammatory speeches. And there could be a public order issue in the sense that communal passions will be inflamed, and then there could be riots and so on. So they said that there would be a public order issue if you are allowed to speak on, given the background of your speeches in the past. This was challenged by Praveen Togadia. It was set aside by the Karnataka High Court. Then the state went up to the Supreme Court, and the Supreme Court said that the restriction is reasonable because of the background. It is known that he has been giving these communally inflammatory speeches, and that there is a possibility, a real possibility of a public order issue. And therefore, the state was, or the district authorities were well within their rights to prohibit his entry.
so that he does not make these speeches which creates a public order issue. The next case of some importance came in 2014. That was a case filed by an organization called the Pravasi Bhalai Sangathan. Now, this was with regard to politicians making inflammatory speeches. And to me, it seems that this is a very important case because it lays down, certain principles, certain guidelines within the judgment, not formal guidelines. Supreme Court said we are not going to frame formal guidelines. But they did say that there are enough laws to tackle hate speech. And we don't need any further laws on this. The problem is not that there is a shortage of laws. The problem is that these laws are not being effectively executed or effectively implemented. Some of the laws are the IPC, for example, Section 153A. You have the Protection of Civil Rights Act. You have the Representation of the People Act. You also have the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act. So you have these laws which are in place, but they are not being effectively implemented or they are not being properly implemented. That is one aspect. So because we have these laws, we don't think, that's what the Supreme Court said, we don't think it is necessary for us to lay down any guidelines. You just have to, proceed in accordance with law. And nevertheless, the Supreme Court did provide some kind of a working definition. This was really the first time when a sort of a definition was provided by the Supreme Court as a working definition, not that this is hate speech and this is not hate speech. That's not what the Supreme Court said. They said that we are providing you a working definition and you have to build on that. The legislature, parliament has to build on that. But what is important about this judgment is that they recognized psychological harm that may be caused to people by the use of hate speech. It's not that, somebody says something hateful or somebody is abusive or makes some communally inflammatory statement or something, and that's it. It's said and forgotten. It leaves behind a psychological impact. And that is something which is very important, which the Supreme Court recognized. It doesn't have to be violence, Just because somebody says something, it should not necessarily lead to a riot or lead to somebody beating up somebody else, but that psychological impact can be there, and that would fall within the definition of hate speech or the result of hate speech. The Supreme Court also said, again, very important, that hate speech can lead to discrimination. It can lead to ostracism. It can lead to segregation. It can lead to deportation. It can lead to violence. And then the Supreme Court went on to say that in extreme cases, it can lead to genocide. Now, we have seen that during the Second World War, where this kind of hate speech led to the execution of, they say, 6 million Jews. So, all this is a part of hate speech, and all this is a result of hate speech, or what could possibly be the result of hate speech. In extreme cases, the Supreme Court said it could lead to genocide. The Supreme Court also looked at the definition of sedition. Now, sedition also talks about hate, about hateful speech. And they said that, sedition talks about hateful speech, and they tried to equate it, in a sense, with hate speech. But I think sedition should fall in a separate category altogether. But at the end of it, the Supreme Court said that given the status that we have, given the developments that have taken place, we would request
the Law Commission of India to prepare a report and tell us how to define hate speech, how to proceed in matters of hate speech. Now, the result of the order of the Supreme Court was, I think, very liberal in the sense that violence is not necessarily a result of hate speech. But the other important consequence was that the Law Commission of India came out with a report. It was the 267th report of the Law Commission. They looked into various aspects of hate speech and the development of the law, not only in India, but also in, through the United Nations and some other countries. And they gave a very detailed report. Importantly, they also prepared a draft bill, which could actually be placed before Parliament, debated, discussed, and enacted into a law if necessary. So they gave a draft bill, but unfortunately, no further steps have been taken. No action has been taken on the report of the Law Commission. In fact, the Law Commission has more or less ceased to exist. No chairperson has been appointed to the Law Commission for the last so many years. And in a sense, it has become a defunct body. I don't know whether it is because of the report that they gave or for some other reasons. But today, there is no effective Law Commission. Anyway, the next important case or the next important development is the decision of the Supreme Court in the case of Hamish. He's a TV personality, and he had said something which was offensive. And the Supreme Court looked into the allegations that were made against him, looked into the case law all over again. And the way I read the judgment of the Supreme Court in the case of Hamish Devgan is that, it has taken a step backward. In the sense, it has tried to include violence as one of the consequences of hate speech, which you will remember when I had mentioned about the Pravasi Bhalai Sangathan. Violence was not considered as an impact. But what the Supreme Court said was very important. They said that look at the content of the speech, look at the intent of the speech or the speaker, look at the harm or the impact that it has caused or is likely to cause. Now, you could have content which could be good faith. Somebody writes an article or somebody writes a research paper. It's a legitimate purpose. So the content may be offensive, but there is no intent to cause any harm. Right? It's a part of the expression of a view that has been canvassed by somebody. Which forms a part of the paper or forms a part of the research. What is the intent? That is the other important thing. That, it could be a neutral sort of a statement, but is there an intent behind it, which is hate? Right? If it is so, then you have to be very careful about it. What is the impact that the speech has? It may not lead to violence. Although in Hamish Devgan's case, the Supreme Court hinted at violence, but it would certainly lead to psychological impact and psychological problems, ostracism, discrimination, segregation, violence. All these would come in. So really, if you go by this content, intent, and harm or impact, I think that's a good, first step to take towards eradicating hate speech or curbing hate speech or punishing hate speech under the Constitution and under the laws that we have. Now, when you talk about effective implementation and so on, there is obviously misuse of the laws. I would just like to mention one case, two cases actually. One is that of Patricia Mukim. She's a very seasoned and highly respected journalist in the Northeast, based in Meghalaya in Shillong. She came out with a tweet or a Facebook post
to say that, the government of Meghalaya is showing apathy towards the treatment of non-tribals, right? And action was taken against her on the ground that, it's a public order issue, and public order is constitutionally, prohibited. And they filed a case against her. She came to the Supreme Court, and the Supreme Court said, listen, she is trying to tell you, that is the government, she's trying to tell you that please protect non-tribals. She's not trying to inflame passions. It's just absolutely the opposite. She wants to bring in peace, but you are interpreting it in such a manner that, she wants to create a problem. So the Supreme Court struck down the action that was taken against her. But this is how, the law can be misused. The second incident that I would like to mention is something which has happened yesterday. I read about it in the newspapers today. You're all aware that there is a Bharat Jodo Yatra that is going on, and it's in Karnataka. It's going on in Karnataka at the moment. And there was a person who was wearing a particular T-shirt which carried a particular slogan, and the police found it offensive, and they beat him up. Why? Because it is offensive, right? It may not be hate, but it is offensive. And according to newspaper reports, charges have been, brought against him, not formally in a court, of criminal intimidation. Now, under Section 507 of the IPC, I don't see how that is possible. So the whole purpose of this is to somehow or the other avoid dissent, avoid disagreement. Either you are with us or you're against us. If you're against us, well, it's a problem. We have enough laws to deal with what we think is hate speech. It may not be, but we think it is hate speech. And we will take action against you, and then you go to the court of law, do whatever you want. But the action has been taken. So this is, I think, where we have to be very careful when we talk about hate, when we talk about hate speech. How are we going to regulate that under the Constitution of India? I think it is time for us to think about it, and time for us to do something positive to ensure that, we wipe this out and this divisiveness that is going on is completely wiped out. Thank you very much. Thank you very much, Justice Lokur. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमें ढेर सारी बातें बताई हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि जिस तरीके से हम हेट को देखते हैं, नफरत को देखते हैं, और क्या हम सुनने को हमें आज मिल रहा है, उधर हमें समझने की जरूरत है कि हमारा कानूनी ढांचा क्या है, हमारा जो कोर्ट्स का जो जुडिशरी है, जो हमारी न्यायपालिका है, वो क्या रास्ता दिखा रही है, क्या सोच है, क्या कानून है। आपने उन सब की बात हमारे साथ बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से रखी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस लोकुर। मैं बात को बहुत संक्षिप्त में हिंदी में अनुवाद कर देती हूँ आपकी बातों का। आपने बताया कि जो आर्टिकल 19(1) है हमारे संविधान का, और आज हम संविधान की बात कर रहे हैं, उसे बचाने की बात कर रहे हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य में आपने बात ही अपनी शुरू संविधान की धाराओं के साथ ही करी। तो आर्टिकल 19(1) जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो हमें अधिकार देता है बोलने का और अभिव्यक्ति का, लेकिन साथ ही में आर्टिकल 19(2) की आपने हमें 19(2) की भी याद दिलाई, जहां पर इस अधिकार पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की भी बात है, क्योंकि ये नहीं है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं और कहीं पर भी और उसके कुछ भी प्रभाव हो, उस पर कोई अंकुश नहीं है। तो जब अधिकार है तो उस अधिकार पर कोई लिमिट्स हैं, वो जो आर्टिकल 19(2) है उसमें बताया गया है। और आपने कहा कि इसके अंदर जो बातें हैं अलग अलग आर्टिकल 19(2) में 19(2) में, वो जरूरी है समझना, क्योंकि उसमें पब्लिक ऑर्डर, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था हम कहते हैं कि अगर किसी ऐसी बात कही जाती है जिससे वो बिगड़ती है,
उस पर रोक है। साथ ही में कोई ऐसी चीज जिससे भारत की स्वतंत्रता पर, भारत की सिक्योरिटी पर कोई कुप्रभाव पड़े, वो भी नहीं बोला जा सकता। लेकिन आपने कहा कि बहुत जरूरी है कि हम समझें कि ज्यादातर इसका इस्तेमाल जो है वो सार्वजनिक व्यवस्था ना बिगड़े, इसके संदर्भ में हमें देखना है और होता भी है। और हमें ये आपने समझाया कि सार्वजनिक व्यवस्था को किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, उसकी परिभाषा क्या हो सकती है। और अगर हम उसे देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मुद्दे के साथ समय समय पर डील किया है, केसेस उसके अंदर जजमेंट दी है, और परिभाषा को भी लिखा गया है। और इसे अगर देखें तो एक दायरों के अंदर देखा जा सकता है, कंसेंट्रिक सर्कल्स जो आपने कहा, जिसमें सबसे बाहर होगी लॉ एंड ऑर्डर, कानूनी व्यवस्था, और उसके अंदर सीमित उससे ज्यादा दायरा है सार्वजनिक व्यवस्था का, और सबसे छोटा दायरा उसमें आता है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट का, जिसके लिए कानून ऑलरेडी है, हम जानते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और इस तरीके के कानून है। तो आपने कहा कि जस्ट बिकॉज कि केवल क्योंकि कोई एक चीज कही जाए वो कानूनी व्यवस्था को लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए परेशानी है, वो पब्लिक ऑर्डर के लिए जरूरी नहीं है कि परेशानी होगी। पब्लिक ऑर्डर को और भी एक संकुचित दायरे में देखने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में इसके ऊपर जो केस हुआ उसमें प्रवीण तगोड़िया का केस था, उसमें इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई। इस केस के अंदर प्रवीण तगोड़िया जो थे, उनकी एक हिस्ट्री थी कि वो वायलेंस इंसाइट करने की, ऐसी बातें रखने की जिससे रायट्स हो सके, और इस कारण से जब कर्नाटका में उनको आकर बोलना था तो उन्हें रोक दिया गया और मामले को उन्होंने चैलेंज किया, और फाइनली मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने अपहोल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट ने उनका ना बोले दिए जाने की जो डिसीजन था उसको अपहोल्ड किया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये रिस्ट्रिक्शन जो लगाई गई ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। क्यों रीजनेबल है? क्योंकि अगर हम इतिहास देखें, इस पूरी चीज का बैकग्राउंड देखें, तो उनकी जिस तरीके की स्पीचेस हैं, वो जिस तरह की इन्फ्लेमेटरी भड़काऊ स्पीचेस देते हैं, उससे रायट्स होने की पूरी संभावना है। और इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें ना बोलने की इजाजत देना ठीक था। और सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही में कुछ गाइडलाइंस भी मुहैया करी, और ये कोई ऐसी फॉर्मल गाइडलाइंस नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ब्रॉडली ये कहा कि बहुत सारे कानून हैं हमारे देश में जिससे कि जो नफरत की स्पीच है उसे काबू किया जा सके, लेकिन तकलीफ ये है कि उन सारे कानूनों का इस्तेमाल सही से नहीं हो रहा। तो ये बहुत जरूरी बात है कि ऐसा नहीं है कि हमारे देश में जो भड़काऊ स्पीचेस हैं, बोलने की बातें हैं, उन्हें नहीं रोकने के लिए कोई कानून है और कानूनों की कमी है, लेकिन क्या वो सही से इस्तेमाल हो रहे हैं? कोर्ट ने कहा नहीं हो रहे। और कोर्ट ने एक वर्किंग डेफिनेशन दी, परिभाषित किया हेट स्पीच को, और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट इसके ऊपर आगे इसे बढ़ाए। पहली चीज उसमें उन्होंने कहा कि हमें ये समझना होगा कि केवल वायलेंस या हिंसा नहीं, ऐसा बात है कि अगर कोई स्पीच दे तो हिंसा हो तभी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तब भी है जब किसी को मानसिक किसी भी तरीके से हार्म पहुंचे। तो केवल ये नहीं है कि फिजिकल हार्म हो, लेकिन मानसिक तरीके से भी अगर किसी को तकलीफ होती है तो वो भी हमें देखना होगा। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि कई बार जो हेट स्पीच है, नफरत की जो फैलाने वाली बातें हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस, इन सब चीजों को, सेग्रीगेशन, इन सब चीजों को भी कॉज करती हैं।
तो लोगों में भेदभाव पैदा करने वाली ये भी हो सकती हैं स्पीचेस। और बहुत एक्सट्रीम केसेस में कोर्ट ने कहा कि ये जेनोसाइड को भी लीड कर सकती हैं। और आपने कहा कि जिस तरीके से हमने ये देखा है होते हुए विश्व में, गांधी जी के समय पे आप हमें ले गए कि जो वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस समय पर किस तरह से जर्मनी में जेनोसाइड हुआ, 60 लाख जूस, एक कम्युनिटी जो थी, उनकी हत्या की गई। वो भी एक तरीके से जो हेट स्पीच है उसका एक अल्टीमेट और एक्सट्रीम फॉर्म का जो रिएक्शन है वो हो सकता है। आपने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लॉ कमीशन से रिक्वेस्ट करी कि वो डिफाइन करे हेट स्पीच को और कैसे आगे बढ़ा जाए। और हमारे देश में जो लॉ कमीशन है उन्होंने एक बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट भी दी इसके ऊपर, जिसने अलग अलग पहलू देखे इसके, और एक ड्राफ्ट बिल भी बनाया कि उसके ऊपर चर्चा हो, सोच समझकर लोगों से बातचीत करके उस बिल को कानून में परिवर्तित किया जाए, जिससे कि इस अगर गलत तरीके से भड़काने की कोशिश हो रही है उसे रोका जा सके। लेकिन आपने कहा कि जैसे बहुत सारे हमारे देश में आज इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्हें खत्म किया जा रहा है सिस्टमैटिकली, लोकतांत्रिक ढांचों को, उसी तरह से आज लॉ कमीशन भी जो है उसे भी वो बंद पड़ा है, उसे भी खत्म ही कर दिया गया है। कोई है ही नहीं जिसकी नियुक्ति हुई है चेयरपर्सन की लॉ कमीशन में। और आपने कहा कि ये कानून जो है आज तक नहीं आया है। फिर आपने बताया कि अमीश देवगन, उनका एक केस था जिसमें बहुत भड़काऊ चीजें कही गई थी, लेकिन आपने कहा कि एक तरह से सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात उठी, ये केस आया, तो जो जजमेंट थी वो शायद इतनी आगे ले जाने वाली जजमेंट नहीं थी, थोड़ी रिग्रेसिव जजमेंट थी, क्योंकि वो वायलेंस के ऊपर फिर फोकस कर रही थी। लेकिन उसमें भी कोर्ट ने कुछ बहुत जरूरी बातें कही। एक चीज के कोर्ट ने कहा कि इंटेंट को देखा जाए और कंटेंट को देखा जाए, कि हम ये देखें कि क्या मंशा थी जो बात कही गई उसके पीछे, और ये भी देखें हम कि क्या बात वास्तव में कही गई, तो उसके अंदर क्या सम्मिलित था जो बात कही गई, क्या वाक्य कहे गए, ये भी देखें, और हम मंशा को भी परखें। और साथ ही में जो बात कही गई फिर ये भी देखें कि उसका क्या प्रभाव पड़ा आगे जाते, क्या लोगों को उससे हार्म हुआ, कुछ हानि हुई, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, ये देखना बहुत जरूरी है। तो आपने इसमें बहुत एग्जाम्पल्स भी दिए कि किस तरह से कई बार ऐसा केस हो सकता है कि कोई शोध हो, कोई पेपर लिखा जाए जिसमें कि कंटेंट जो है, जो कंटेंट है, उससे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक पाया जाए, लेकिन उसके पीछे मंशा केवल रिसर्च की हो और बिल्कुल भड़काऊ मंशा नहीं हो, तो उससे सुप्रीम कोर्ट में प्रोटेक्टेड एक तरीके से रखा गया है। तो आपने कहा कि ये जो बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही, ये अच्छी एक डिबेट शुरू करने वाली, सोच को आगे ले जाने वाली बातें हो सकती थी। लेकिन हम देख रहे हैं लगातार कि किस तरह से जो कानून है उनका दुरुपयोग भी हो रहा है, हेट के कानूनों का, हेट स्पीच के नाम पे कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है। पहला केस आपने हमें बताया कि सुप्रीम कोर्ट में पेट्रिशिया मुकिम, हम सब जानते हैं उनको, वो वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, उनका केस जो आया, उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा था मेघालय की जो सरकार है कि वो किस तरह से जो नॉन ट्राइबल, गैर आदिवासी जो कम्युनिटीज हैं उनकी ट्रीटमेंट कर रही है, उसके बारे में उन्होंने फेसबुक पोस्ट लिखा। और केवल वो पोस्ट लिखने के लिए उन्हें उनके खिलाफ तमाम चीजें शुरू कर दी गई और कहा गया कि आप तो जो सार्वजनिक व्यवस्था है उसे खराब करने की आपकी मंशा है और आप राइट्स कॉज कर सकते हैं, और उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो कोर्ट ने इसे स्ट्राइक डाउन किया, सारे एक्शन को। और आपने कहा कि ये साफ नजर आता है इस केस के तहत कि किस तरह से हेट लॉज का इस्तेमाल एक कंप्लीटली परवर्स तरीके से, गलत तरीके से किया जाने की कोशिश है, लोगों के संवैधानिक अधिकार को रोकने के लिए कोशिश हो रही है।
दूसरी ओर आपने जो हाल ही का एग्जाम्पल है कि भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है कांग्रेस की, उसमें किसी ने एक टी शर्ट पहनी थी जिस पर कोई स्लोगन लिखा था और पुलिस को वो स्लोगन ऑफेंसिव लगा। पुलिस को लगा कि हमें पसंद नहीं आ रहा स्लोगन, हमें ऑफेंसिव लग रहा है, और पुलिस ने पीट दिया उस इंसान को, मारपीट करी उनके साथ में जिन्होंने ये टी शर्ट पहन रखी थी, और उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस भी लाए गए 507 धारा 507 के तहत, और क्रिमिनल इंटिमिडेशन के चार्जेस लाए गए हैं। इसका मतलब है, आपने कहा कि अगर कोई टी शर्ट पहन के स्लोगन की कोई भी चल रहे हैं, मतलब बिना ये सोचे समझे कि इसका क्या प्रभाव हो सकता है, मंशा को सोचे हुए, कंटेंट को सोचे हुए, सीधा पुलिस जिस तरीके का ये एक्शन ले रही है, टोटली आर्बिट्ररी एक्शन है, और ये दर्शाता है कि किस तरह से आज जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोई भी आवाज जो उठ रही है, जो डिसेंट की आवाज है, उसे कुचलने के लिए, जो पसंद नहीं आ रही इनकन्वीनियंट आवाज है, उसे कुचलने के लिए इन सब हेट लॉज के नाम पर लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, जिससे कि फ्री स्पीच के ऊपर एक चिलिंग इफेक्ट हो सके, फ्री स्पीच और एक्सप्रेशन पे। और आपने कहा कि ये बहुत ही चिंता की बात है और आज हमारे देश में इसके ऊपर चर्चा की भी जरूरत है और हमें सोचना होगा। जस्टिस लुकुर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच for talking to us about all these issues. And I think in today's day and age, when we see calls for genocide at Dharam Sansads, we see the kind of hate speeches, like you also mentioned, being given by union cabinet ministers, no less, who call for goli maro and shooting people. I think that it's very important for all of us to understand and for us to take this discussion and debate forward, because I think many of us who are free speech and expression activists and who believe that there should be free speech and expression, there would be many aspects that we need to pick from here. We need to think about it, and each citizen of the country today needs to engage with this important issue and what the contours of free speech and expression today need to be, and where does hate speech become something that needs to step in, the judiciary needs to step into control. Thank you very much. Thank you, and I'm going to now request Amrita, who is running this behind the scenes, to please play a short song for us before we move on. हम जानते हैं कि हमारे देश में जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो हम गानों के बगैर रेजिस्टेंस की बात नहीं कर सकते. When we talk about resistance, we talk Anjali, your mic is rustling a little bit. Can you just hold it up? Thanks. When we I think the rustling is coming from elsewhere, Amrita, that will have to be muted. So when we talk about when we talk about countering hate, we talk about resistance. We don't do it without culture, we don't do it without songs. So we are going to today, as we talk about this very important topic, just like Gandhiji incorporated music, songs of resistance in all his campaigns. We are also going to listen to music, so and songs of resistance. This is a song by the lyrics are by Kabir, and we have Ahvan singing this song for us. Can we please have the song, Amrita? चल
अरे चल मुसाफिर होले होले बड़ मुसाफिर होले अरे चल मुसाफिर होले होले बड़ मुसाफिर होले राह में रोड़ी राह में बजड़ी राह में रोड़ी राह में बजड़ी राह में कंकड़ कांटे राह सरल हो जाएगी यदि सुख ही तू बांटे अरे चल मुसाफिर होले होले बड़ मुसाफिर होले 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 प्रीत भाई जब दिन से गाड़ी आगे है लगन में तर हो जाएगा छोड़ जगत के अरे चल मुसाफिर होले होले बड़ मुसाफिर होले 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 अरे चल मुसाफिर होले बड़ मुसाफिर शुक्रिया। और वेदी और पाखी सिन्हा वो हमारे साथ जुड़ी भी हैं, सुमन भी थे इसमें गिटार पे जो हमें सुनाई दिए, और वेदी और पाखी बाद में हमारे साथ बात भी करेंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये उनका रिकॉर्डेड गाना था जिससे कि कोई ग्लिच ना हो टेक्निकल। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आई एम नाउ गोइंग टू रिक्वेस्ट Professor Mridula Mukherjee. We all know Professor Mukherjee. She is one of the authorities. She's a historian. She's the former director of the Nehru Memorial Museum and Library. She's one of the authorities on Gandhi. And it's our pleasure to have her here with us to talk about Gandhi's philosophy and the relevance of his philosophy, his values in today's day and age. मैं स्वागत करना चाहूंगी प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी जी का, जो कि हमारे साथ जुड़ी हैं और वो इतिहासकार हैं और वो बिल्कुल अथॉरिटी हैं महात्मा गांधी पर। उनकी सोच, उनकी फिलॉसफी आज किस तरीके से हमें बहुत जरूरी है, कैसे गाइड कर सकती है। मृदुला जी, आज आप हमारे साथ जुड़ी हैं, उसके ऊपर बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड द फ्लोर इज नाउ योर्स मृदुला फॉर द नेक्स्ट 12 minutes. धन्यवाद अंजलि। I'm very thankful to Anhad and to the Sartak Nagrik Sangathan for inviting me to this webinar. This is the inaugural webinar of this series in the context of this campaign, nationwide campaign against hate and to defend the Constitution, and I'm honored to be able to be a part of it. I think all of us in India today, wherever we are, it is our duty to participate in whatever way we can in this very positive step that we are seeing, which is being taken around us. This campaign, the other big national campaign by the Congress,
of the Bharat Jodo Yatra. I think all these are bringing in a new breath of fresh air into the country. I think all of us who've been part of civil society movements or thinking in various kinds of ways over the last few years, I think we will admit that a certain sense of despondency had begun to set in, a certain sense of despair. And even while we continued slogging along, there was a receding, the hope seemed to be receding. I think all of us will agree that some of these new developments certainly are giving a new lease to hope. And without hope, without this spirit, no battle can be fought. Just as Anjali said, without music, no battle can be fought. Similarly, I think without hope, no battle can be fought. So these are all very, very positive developments, and I'm honored, as I said, to be able to contribute in my very, very small way. Anjali has been too kind to call me, an authority on Gandhi. I think to become an authority on Gandhi, frankly, you need a few lifetimes. One is not enough. The more I have studied him, the more I am studying him, I find every day that there is so much that is there to learn. I think still a large part of the depth of what Gandhi contributed in terms of not just his ideas, but his actual practice. Because Gandhi was not an ideologue. He was not a theoretician. He wrote, of course, extensively. There are 100 volumes of just his collected works, and there's a lot more books written by him and interviews and this and that and the other. But there is all his actual practice to still analyze. We have to go behind what is apparent on the surface to get the full meaning. There's also still so much to do to understand Gandhi. We have to look at the impact he had on the world. हमें हिंदुस्तान से बाहर भी जाके मार्टिन लूथर किंग की जो मूवमेंट है उसको समझने की जरूरत है, और बहुत सारी जो डेमोक्रेसी के लिए लड़ाइयां लड़ी गई हैं, नेल्सन मंडेला की मूवमेंट, साउथ अफ्रीका की, पोलैंड में वलीसा की मूवमेंट, कितने लोग जिन्होंने गांधी जी को मान के, उनके विचारों को, उनके प्रैक्टिसेस को, उनके मेथड को मान के आगे बढ़े हैं, और कितने अलग अलग पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट और इकोनॉमिक और सोशल कॉन्टेक्स्ट में गांधीयन मेथड्स, बेसिकली द मेथड्स ऑफ सत्याग्रह, of non-violent civil disobedience, of bringing in the people into politics in their millions. That is the heart of Gandhi's message as a method, as I understand it. That there is no politics without people, and when he means people, he doesn't mean a few people. He doesn't mean the elite, but there is room for the elite. The intellectual elite, the cultural elite, all were part of Gandhiji's movements. But his movements had the millions with it. And we can see the difference. In the last few days, just a fortnight or a little more, we are seeing before our eyes, we were, many of us, I'm sure, and many were even more skeptical about whether the Bharat Jodo Yatra would get any traction. But the people have shown by taking to it that there is something positive happening. And when people come in their thousands, when people begin to come in their hundreds of thousands, as under Gandhi they came in their millions, you begin to know that something very powerful, elemental, something beyond what you can comprehend is actually happening. And that's what mass politics is all about. And that's what Gandhiji was a specialist of. That's why the Congress, after it, again and again, in so many different occasions, they recognized him as the prime leader, because in that stage of mass revolution, which the Indian national movement was, it was he who had mastered that art. It was he who understood the pulse of the people on this question of when they were ready to fight. And when
things were actually stirring in their hearts. He was once asked, as late as 1946, somebody asked him a question and said, Gandhiji, why don't you now create a movement? Why don't you give a call for a movement? You have created movements so many times. Now the issue is one of division of the country. Why don't you create a movement now against partition? And his answer, I think we should all remember. He said, you are wrong. I have never created a movement in my life. All that I have done is that whenever there is something positive stirring in the hearts of the people, I have seized upon it. I have given it a shape. I have given it a voice. I have given it expression, and I have taken it forward. And he said, today, I don't see anything positive stirring in the hearts of the Indian people. So where do I build a movement from? Movements are not built out of thin air, even by the greatest of leaders, whether it's Mahatma Gandhi or Rahul Gandhi or anybody else. I'm not even making a comparison. It is just that today we are talking about the present context. Therefore, I'm bringing in these names. But I think it's extremely important to remember as we push forward on this task, how important it is to bring in people into politics, whether we do it at our local levels or whether we do it at the mass level, at a national level. There is no genuine politics without the participation of the common people. And that's again what Gandhiji's speciality was. He brought in the poor, his concept of Antodaya and Sarvodaya. Everybody and the last man. There is no politics unless the last man participates. Aakhri Aadmi, his talisman, which said that when you are in doubt, जब आपको किसी भी अपने कुछ कोई भी कदम लेने उठाने जा रहे हैं, कोई पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, आप अगर अब आपके मन में दुविधा है कि ये जो मैं करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ ठीक है या नहीं है, तो आप अपने सामने आपने जो भी सबसे एक ऑप्रेस्ड या जो भी एक डेस्परेट इंसान को देखा हो, उसकी शक्ल आप अपने सामने लाइए और फिर अपने आप से पूछिए कि ये कदम जो मैं उठाने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, इसका उसकी जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा। और आपको बिना किसी दुविधा के आपको जवाब मिल जाएगा। अगर ये कदम उसकी जिंदगी को थोड़ा भी बेहतर करता है तो ये कदम ठीक है, और अगर ये कदम उसकी जिंदगी को और बदतर करता है तो ये कदम ठीक नहीं है। तो ऐसे कितनी ही चीजें हैं जिनके बारे में मैं बात कर सकती हूँ, पर आज का मुद्दा जो है इसके थोड़ा सा टाइम मैं उस पर जरूर देना चाहती हूँ, वो ये है कि नफरत हटाओ, भारत का संविधान बचाओ। दूसरी जो यात्रा साथ में चल रही है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, तो आइडियाज तो दोनों में एक ही है। जहां तक संविधान का सवाल है, मैं दो ही शब्द कहूंगी कि भारत का जो संविधान है वो हमारी स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई है उसके दौरान जो सारे आइडियाज सामने आए, जो पॉलिसीज सामने आई, जिनके ऊपर कम से कम 40-50 साल डिबेट हुआ। 1885 से तो कांग्रेस का ही निर्माण हो गया। उसके बाद 1895 में लोकमान्य तिलक ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल देश के सामने रखा। उसके बाद मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट आई। उसके पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल जो था सेंट्रल असेंबली में हुआ, फिर कराची रेजोल्यूशन हुआ। तो कितने स्टेजेस थे जिसमें कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का ढांचा क्या होगा ये निश्चित होता जा रहा था एक इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइंग रूम में बैठ के नहीं लिखी गई है या लेजिस्लेटिव असेंबली के चेंबर में भी बैठ के लिखी नहीं है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लोगों ने अपनी लड़ाई लड़के लिखी है। जब हजारों की और लाखों की और करोड़ों की तादाद में लोग जमीन पर सड़कों पर उतर आते हैं तो एडल्ट सफरेज अपने आप हो जाता है। एडल्ट सफरेज किसी की देन नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा लीडर हो और कितना भी बड़ा लॉ मेकर हो या कितना भी बड़ा थिंकर हो। एडल्ट सफरेज, इसी तरह भारत की महिलाओं ने सड़कों पे आके अपने पॉलिटिकल राइट्स जीते हैं। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता था
कि विमेन सफ्रेज जो है वो बाद में सोची जाएगी। आप ये नहीं कह सकते लड़ाई में पूरा हिस्सा लो, जेल जाओ, सब कुछ करो, पर आपको जो वोट है वो हम बाद में सोचेंगे। तो ये जो लड़ाइयां हैं, जो फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की लड़ाई है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी किसी की कोई ब्रिलियंट आइडिया नहीं था, किसी के दिमाग से निकला। ये भी हमारी आजादी की लड़ाई में से निकला, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए हमारे स्वतंत्रता संग्राम ने आप बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। फ्रीडम ऑफ द प्रेस, सबसे पहले सुरेंद्रनाथ बैनर्जी गए जेल, लोकमान्य तिलक गए जेल फॉर फ्रीडम ऑफ द प्रेस, क्योंकि ऐसे ऐसे उस वक्त लेजिस्लेशन थे जहां के प्रेस को कोई फ्रीडम नहीं थी। तो ये सारे जो अगर आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना मतलब है हमारी स्वतंत्रता संग्राम की जिस चीज के लिए वो लड़े, जो उद्देश्य था, उसको बचाना है। संविधान एक किताब नहीं है जो कि 1950 में या 1949 में जो है कुछ बहुत बुद्धिमान लोगों ने, चाहे वो कितने भी बुद्धिमान हो या कितने भी बड़े लीडर हो, उन्होंने बैठ के लिखी। वो उसका एक डिस्टिलेशन था, हमारी फ्रीडम स्ट्रगल का एक डिस्टिलेशन था, जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसको एक लीगल फॉर्म दिया गया। इसलिए संविधान बचाने का मतलब आजादी की जो के लिए जिसके लिए हम लड़े थे, उस आजादी को बचाने से हम अलग नहीं कर सकते। ये राइट्स हमें मिले ही है क्योंकि आजादी की लड़ाई में जो लोग, जो हमारी भारत की जनता जिन्होंने इतनी कुर्बानियां दी, उन्होंने ये हक लड़ के लिए है, ये किसी की देन नहीं है, वी द पीपल। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको रिकॉग्नाइज किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा है वी द पीपल गिव टू आवरसेल्व्स। ये उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है कि किसी ने ये नहीं दिया हमको, कोई महाराजा ने नहीं दिया और कोई लीडर ने नहीं दिया, कोई इंटेलेक्चुअल ने नहीं दिया, ये लोगों ने, हम लोगों ने लिया है। जो भी इसमें है वो हमारी अपनी, हमने इसको लड़के लिया है। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं। तो इसी संदर्भ में मैं ये भी कहूंगी कि दूसरा जो उसका हिस्सा है कि नफरत छोड़ो, ये जो है ये भी बिल्कुल जो स्वतंत्रता संग्राम के जो असूल थे और खासकर गांधी जी के जो उसूल थे, उनसे आप अलग नहीं कर सके। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब आजादी का पहला बड़ा नेशन वाइड मास अभियान हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो 1920 में गांधी जी ने जिसका कॉल दिया, तो उसके कुछ उन्होंने प्रिंसिपल्स बनाए, कुछ प्रोग्राम बनाए कि ये आइटम इसमें जरूरी है। तो मैं बताना चाहूंगी उसमें कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी उस वक्त से सिविल जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी उसके प्रोग्राम में डाला गया था। जैसे एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कास्ट के खिलाफ, उस प्रोग्राम में डाला गया था। उस प्रोग्राम में और भी चीजें थी, स्कूल को बॉयकॉट करो, कॉलेज को बॉयकॉट करो, ये करो, खादी, चरखा, ये सारी चीजें, पर उसके साथ हिंदू मुस्लिम यूनिटी और एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आप देख लीजिए हिंदुस्तान के दो बड़े मुद्दे, कास्ट और कम्युनलिज्म, दोनों जो है पहली ही लड़ाई में जो है गांधी जी इसको एकदम सामने, जिसको हम कहते हैं आजकल फ्रंट बर्नर पे ले आए थे। लोग आजकल कई बारी मैंने देखा है खिलाफत मूवमेंट जो गांधी जी ने सपोर्ट करी, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एक तरह से हिस्सा थी, उसका क्रिटिसाइज करते हैं कि गांधी जी ने रिलीजन को पॉलिटिक्स में ले आए खिलाफत को सपोर्ट करके। खिलाफत एक आउटडेटेड इंस्टीट्यूशन था, पर गांधी जी ने मुसलमानों को खुश करने के लिए उसको ले आए। ये बिल्कुल गलत धारणा है। गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी चाहते थे, और वो ये जानते थे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बगैर स्वतंत्रता की लड़ाई आगे नहीं जा सकती। और वो मुसलमानों को ये संदेशा देना चाहते थे, बात खिलाफत की नहीं है, बात मुस्लिम्स के सेंटिमेंट्स की है, कि आपको दुख लगा इस बात का क्योंकि अंग्रेजों ने आपको प्रॉमिस किया था कि वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो जाएगी तो टर्की में जो खलीफा का पोजीशन है उसको हम नहीं छेड़ेंगे, और टर्की का जो होल्ड है रिलीजियस प्लेसेस पे इस्लाम के, उसको हम नहीं डिस्टर्ब करेंगे। ये प्रॉमिस दे के आपने मुसलमानों को रिक्रूट किया आर्मी में, और आज मुसलमानों में इस बात को लेके नाराजगी है।
उनमें हर्ट फीलिंग्स है, उनमें दुख है, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम लोग, हिंदुस्तान के बाकी लोग आपके साथ, आपके दुख के समय आपके साथ खड़े हैं, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं। इसमें इशू खिलाफत का और रिलीजन को पॉलिटिक्स में लाने का नहीं था। मैंने ये सिर्फ इसलिए बताई कि इसको लेके बहुत प्रोपेगेंडा किया जाता है। ये पूरा अपीजमेंट वाला जो थियोरी है, जो आज भी आप सुनते रहेंगे, ये कॉन्सेप्ट अपीजमेंट का आज का नहीं है। ये बहुत दिन से, ये जब भी ऐसा कुछ होता है तो ये थियोरी बन जाती है कि अपीजमेंट हो रहा है मुस्लिम्स का। तो गांधी जी ने इसको कभी भी माना नहीं था। 15 साल बाद उनसे जब सवाल किया गया कि आज अगर आप वो मूवमेंट करें तो क्या आप मानेंगे कि आपने गलती करी थी, तो उन्होंने बोला बिल्कुल नहीं, मैं आज भी अगर मुझे मौका मिले तो मैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बिल्कुल वही करूंगा जो मैंने तब किया था, उसमें कोई गलती नहीं करनी थी। बाद में जो डेवलपमेंट्स है उसके अलग कारण है, खिलाफत मूवमेंट जो है कम्युनलिज्म का कारण नहीं है। इसी संदर्भ में अंजलि, मेरे पास समय और कितना है? जी, आप अपना 2-3 मिनट लें और Can't hear you. another 3 minutes or so. Okay. Another So 3 minutes. I would just like to share with you some very beautiful quotations from Gandhiji, just in order to make it so clear that he had that he was absolutely clear on the issue of communalism and secularism, and never made any compromises with it. Because it is often said that he wanted religion to be in politics, which is just not true. गांधी जी ने जब 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट का कॉल दिया, तो उन्होंने बम्बई में एआईसीसी सेशन था, ग्वालियर टैंक में बहुत बड़ा एक आयोजन वहां पे हुआ, जहां पे उन्होंने कॉल दिया कि हमें क्विट इंडिया, अंग्रेजों को क्विट इंडिया, और उसके बाद वो बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू हुआ। तो उनकी वो स्पीच है, एक आइकॉनिक स्पीच है जो उन्होंने हजारों लोगों के सामने दी। उसमें से मैं थोड़े से 2-4 जो उसके हिस्से हैं मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, ताकि आप समझ सके कि ये हेट को जो डिफीट करना है ये कितना जरूरी है गांधी आइडियल्स को, अगर हम विश्वास करते हैं और उसको आगे ले जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मैं अंग्रेजी में कोटेशन पढ़ रही हूँ, Those Hindus who, like Dr. Munje and Shri Savarkar, believe in the doctrine of the sword may seek to keep the Muslims under Hindu domination. I do not represent that section. और ये दोनों हिंदू महासभा के थे, मुंजे और सावरकर. I represent the Congress. The Congress does not believe in the domination of any group or any community. It believes in democracy, which includes in its orbit Muslims, Hindus, Christians, Parsis, Jews. Every one of the communities inhabiting this vast country. Millions of Muslims in this country come from Hindu stock. How can their homeland be any other than India? The Congress does not belong to any one class or community. It belongs to the whole nation. It is not fighting on behalf of the Hindus, but on behalf of the whole nation, including the minorities. It would hurt me, listen to this, it would hurt me to hear of a single instance of a Muslim being killed by a congressman. In the coming revolution, congressmen will sacrifice their lives in order to protect the Muslim against the Hindus' attack, and vice versa. It is a part of their creed, and it is one of the essentials of non-violence. Responding a few days later to a complaint that he received from some Congress workers of Delhi about anti-Muslim propaganda being carried out in the RSS shakhas, he asserted, I quote, "Free India will be no Hindu Raj. It will be Indian Raj based not on the majority of any religious sect or community, but on the representatives of the whole people without distinction of religion." We also know, we can never forget, that Gandhiji was martyred to the cause of secularism. We know why he was the target of the communalists, because it is he who stood
foremost between them and their ambition of a Hindu Rashtra. He had, from 1946 till his death in 1948, fought a valiant struggle against the forces of communalism. हम सबको मालूम है नोआखली की उनकी यात्रा 4 महीने नवंबर 46 से लेके मार्च 47 तक वो नोआखली में रहे, जहां के बहुत बुरी हिंसा हुई थी। वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था, हिंदू माइनॉरिटी एरिया था और बहुत बुरी हिंसा वहां हुई थी। वहां सरकार भी जो थी हॉस्टाइल थी, मुस्लिम लीग की थी। 4 महीने वो वहां पे रहे, बिल्कुल हॉस्टाइल सिचुएशन में। कई बार वो अकेले ही रहते थे, अपने साथियों को सबको उन्होंने भेज दिया। जब लोग उनके रास्ते में शीशा, टूटा हुआ शीशा की बोतलें फेंकते थे, गंद फेंकते थे, तो वो अपनी खड़ाओं, चप्पल भी उतार दी उन्होंने और पैदल चलना शुरू कर दिया और कहा कि जितना मुझे आप तंग कर सकते हो करो, मैं हटने वाला नहीं हूं। मैं फिर भी जो जवाब है, मैं हेट का जवाब हमेशा प्यार से दूंगा, लव से दूंगा। He always said, hate only begets hate. You cannot conquer hate with hate. You cannot conquer violence with more violence. The answer to the atom bomb is not more atom bombs. The answer to the atom bomb is peace. Similarly, the answer to hate is love. I hope today on his birthday, we can all remember that and we can take this message of love and peace and love for the poor of this country forward. Thank you very much. Thank you so very much, Mridula ji, and also for making my task easier, because you were so effortlessly bilingual that I don't have to translate much of what you said, because you brought in your thoughts in both the languages. I think there was a mine of information. And of course, you said that I should not call you an authority on Gandhi, because it will take many lifetimes for anyone to become an authority on Gandhi's thoughts and philosophy. But I think you really distilled his thoughts and his philosophy for us and linked it back to our times, where each one of us today has this choice to make, where we are no longer just fighting one party or one organization. Hate is so much a part of that poison is being spread so quickly into our society that it's frightening. Because what finally happens, that is for a nation to truly progress, truly live in harmony, we need, like you said, to counter hate with love. And unless we learn from Gandhi's philosophy, where he, like you said, he wasn't just an ideologue, he was a practitioner. So unless we learn from his practice, where he stood not just for the last person, but against every single act of hate and communalism, and very, very systematically rejected it, unless we bring that ethos into our lives, we are not going to succeed in this battle of defeating hate, and we will not be able to succeed in the Quit Hate and Save the Constitution abhiyan, the campaign. So aapka bahut bahut shukriya मृदुला जी, आपने हमें याद दिलाया है कि आज के परिप्रेक्ष्य में, जहां पर नफरत जो है वो केवल किसी एक संस्था या पार्टी तक सीमित नहीं रह गई है, वो उसे ऐसे फैलाया जा रहा है कि उस नफरत की जो जहर है वो अलग अलग तरह से लोगों में फैलाई जा रही है, और लोग उसे बहुत हद तक उस प्रोपेगेंडा को मानने भी लगे हैं। तो ऐसे में गांधी जी की जो पूरी जिंदगी है, उनका फलसफा है, उनकी जो सोच है, उसे वास्तव में हमें अपने जीवन में उतारने की जरूरत है, अगर हम चाहते हैं नफरत को हटाना और संविधान को बचाना। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एवर सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड शेयरिंग योर थॉट्स विद अस सो जेनरसली।
we now have a short poem which is being read out by Ratna Pathak Shah. We have seen her on screen. She's a very, very well-known actor, a public personality, somebody who doesn't hesitate to say what she thinks and does not hesitate to speak out against hate and divisiveness. So I'm going to request Amrita now to play the video that she has put together for us. Ratna Pathak Shah. हेलो आदाब नमस्कार मैं रत्ना पाठक शाह मैं आज आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ आज गांधी जयंती है आज अहिंसा और शांति की बातें करने का खास मौका है इसीलिए मैं आपको ये कविता अ ब्रेव एंड स्टार्टलिंग ट्रूथ सुनाना चाहती हूँ ये माया एंजेलू की लिखी हुई है माया एंजेलू अफ्रीकन अमेरिकन कवि हैं मुझे उनकी कविताएं बहुत पसंद है क्योंकि वो जिस तरह से अपनी बातें सुनाती हैं अपनी कहानी अपने लोगों की कहानी दुनिया की कहानी जिस तरह से सुनाती है अपनी कविताओं में उसमें सच्चाई तो झलकती है लेकिन उम्मीद भी उतनी ही स्ट्रांगली दिखती है आज उस उम्मीद की मुझे बहुत सख्त ज़रूरत महसूस हो रही है इसलिए ये कविता सुनिए A brave and startling truth by Maya Angelou. We, this people on a small and lonely planet traveling through casual space, past aloof stars across the way of indifferent suns to a destination where, all signs tell us, it is possible and imperative that we learn a brave and startling truth. And when we come to it, to the day of peacemaking, when we release our fingers from fists of hostility and let the pure air cool our palms, when we come to it, when the curtain falls on the minstrel show of hate and faces suited with scorn are scrubbed clean, when battlefields and Coliseum no longer rake our unique and particular sons and daughters up with the bruised and bloody soil to lie in identical graves in foreign soil. When the rapacious storming of the churches, the screaming racket in the temples have ceased, when the pennants are waving gaily, when the banners of the world tremble stoutly in the good clean breeze, when we come to it, when we let the rifles fall from our shoulders and the children dress their dolls in flags of truce, when landmines of death have been removed and the aged can walk into evenings of peace, when religious ritual is not perfumed by the incense of burning flesh and childhood dreams are not kicked awake by nightmares of abuse. When we come to it, then we will confess that not the pyramids with their stones set in mysterious perfection, nor the gardens of Babylon hanging as eternal beauty in our collective memory, not the Grand Canyon kindled into delicious color by western sunsets, nor the Danube flowing its blue soul through Europe, not the sacred peak of Fuji stretching to the rising sun, neither Father Amazon nor Mother Mississippi who, without favor, nurture all the creatures in the depths and on the shores. These are not the only wonders of the world. When we come to it, we, this people, on this minuscule, kithless globe, who reach daily for the bomb, the blade, and the dagger, yet who petition in the dark for tokens of peace. We, this people on this mote of matter, in whose mouths abide cankerous words which challenge our very existence, yet out of those same mouths come songs of such exquisite sweetness that the heart falters in its labor and the body is quieted into awe. We, this people on this small and drifting planet
whose hands can strike with such abandon that in a twinkling life is sapped from the living. Yet those same hands can touch with such healing, irresistible tenderness that the haughty neck is happy to bow and the proud back is glad to bend. Out of such chaos, of such contradiction, we learn that we are neither devils nor divines. When we come to it, we, this people, on this wayward floating body, created on this earth, of this earth, have the power to fashion for this earth a climate where every man and every woman can live freely without sanctimonious piety, without crippling fear. When we come to it, we must confess that we are the possible, we are the miraculous, the true wonder of the world. That is, when, and only when, we come to it. Thank you. This poem certainly gave me goosebumps. I think बिल्कुल हमारे रोंगटे खड़े करने वाली पोएम थी, कविता थी, जो कि रत्ना पाठक ने हमारे साथ मेरी अंजलू की जो पोएम उन्होंने शेयर करी. मैं उसका पूरा ट्रांसलेशन कतई करने की हिमाकत नहीं करूंगी, लेकिन केवल ये कहना जरूरी है कि वो कुछ सत्य की, ऐसे सत्य तथ्यों की बात कर रही थी, कैसे बहादुर और चौंका देने वाले सत्य. और वो सत्य क्या है, उसमें उन्होंने कहा कि हम बातें करते हैं और हम बंटवारा करते हैं झंडे जो हम गाड़ते हैं अलग अलग रंगों के, पर जो जरूरत है वो है मैत्री के, शांति के एक झंडे की, प्रतीक की. और जब हम उस मकाम पर पहुंचे, अगर हम सारे विश्व के लोग, इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे देश के भी लोग अगर उस मकाम पर पहुंचे, तो हर एक पुरुष, हर एक महिला आजादी से, सम्मान के साथ, बिना डर के, बिना डिस्क्रिमिनेशन के जी सकेंगे. तो केवल उस मकाम तक पहुंचने की देर है, हमारे सोच को उस मकाम तक पहुंचने की देर है. तो बहुत बहुत शुक्रिया. और अब जो हमारी अगली स्पीकर हैं, उनको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी. अरफा खानम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं. अरफा खानम शेरवानी और जाना माना चेहरा हैं. अरफा, उन्हें किसी प्रकार की इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, पर उनके बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसे माहौल में जहां डर लोगों को बोलने से रोकता है, वो अरफा पर कोई प्रभाव नहीं करता. ऐसा हमेशा देखने को हमें मिलता है. और अरफा बेखौफ और बिना किसी संकोच के अपने मन की बात कहती हैं, हमारे मन की बात कहती हैं, जस्टिस की बात कहती हैं, कि जो सही है उसकी बात कहती हैं. और जो हम कम्युनल फोर्सेस और हेट का, जो नफरत का आज हम इतना बड़ा बवंडर जो हम देख रहे हैं, उसको कॉन्कर करने की बात कहती हैं. तो इसीलिए आज हमने रिक्वेस्ट करा अरफा से कि वो आए and that she shares with us. Somebody has written probably the most trolled person. Yes, I agree, she is, because she does not mince her words. She does not bow down before intimidation. And that is why it's our pleasure and our honor to have Arfa with us today. And Arfa, I request you to speak with us for the next 12 minutes in your own characteristic style about what is the status of the media today, what is the contribution of the media in spreading this hate, and if we have to save the constitution, हम जिसकी बात कर रहे हैं कि संविधान को बचाना है, तो मीडिया का आज क्या रोल है और क्या हमें करने की जरूरत है, जिससे कि हम वास्तव में जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं उनको हम बचा सकें. तो अरफा, the floor is yours for the next 12 minutes.
बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि, सबसे पहले तो मुझे यहाँ दावत देने के लिए, और इतने सारे मैं कहूंगी चांद और सूरजों के बीच में एक छोटा सा सितारा हूँ सिर्फ मैं। और मैं यहाँ जो देख रही हूँ जितने लोग यहाँ जमा हुए हैं, मुझे लगता है ये 100-150 जो लोग हैं बड़े जिद्दी किस्म के लोग हैं ये। क्योंकि ये जो आप लोग कर रहे हैं ये भूल जाने के खिलाफ याददाश्त की एक जंग है, ये भूल जाने के खिलाफ याददाश्त का एक संघर्ष है। आज इस देश में जो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने ट्वीट किया और मैं ये भी आपको बताऊंगी कैसे, जब मैंने कहा कि इंडियाज ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू ह्यूमैनिटी और द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, और जो ग्रेटेस्ट एम्बेसडर ऑफ पीस जो पूरी दुनिया में मैंने देखा खुद अपनी आंखों से, मैं वो कुछ एनेक्डोट्स भी आपके साथ शेयर करूंगी कि गांधी होने के क्या मायने हैं, और एक हिंदुस्तानी के तौर पर जब मैं दुनिया में जाती हूँ अलग अलग देशों में तो मुझे किस तरह से जाना जाता है। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि बड़े ही खूबसूरत और बड़े ही जंगजू जिद्दी हैं ये 100-150 लोग जो यहाँ मौजूद हैं, और जिद कर रहे हैं कि नथुराम गोडसे के दौर में जब उनकी आइडियोलॉजी को मानने वाले, प्रमोट करने वाले, उनकी आइडियोलॉजी को ही सत्य मानने वाले लोग जब हमारे ऊपर शासन कर रहे हों, ऐसे वक्त में गांधी को याद करना एक तरह की क्रांति है। ये 100-150 लोग एक क्रांति कर रहे हैं इस छोटे से, जो मैं कहूंगी एक भवन जो हमने बनाया है, ये जो हाउस है हमारा लोगों का। अभी ट्विटर पे आप जाइए, सोशल मीडिया पर या फेसबुक पे चली जाइए, आप इंस्टाग्राम पे चले जाइए, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आपको वहां पर गांधी के कोट्स नहीं मिलेंगे, आपको वहां गांधी का कोई आइडियोलॉजी या उन्होंने क्या किया, या मैं कहूंगी पीस और नॉन वायलेंस के अलावा भी गांधी जी ने क्या किया, उसके बारे में कोई बातचीत नहीं है। अभी हम देख रहे हैं कि नाथुराम गोडसे जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पे। और अगर आपको एक मैं थोड़ी सी वानगी दे, वो किस चीज से लड़ रहे थे, ये समझने के लिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले हम अपने दुश्मन को पहचाने, हमारी जंग क्या है उसे पहचाने। शायद तभी हम, जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि मर्ज क्या है तो उसका इलाज भी मुमकिन नहीं है। अभी आप देखिए, छोटी सी आपकी वानगी मैं दे रही हूँ जिसमें गोडसे और गांधी की तस्वीर है, जिसमें गोडसे को रियल हीरो बताया जा रहा है। इसके अलावा वीडियोस बनाए जा रहे हैं जिसमें गोडसे एक हीरो है। इसके अलावा हर गोडसे, अब घर घर गोडसे के पोस्टर्स बने हुए हैं जो ट्विटर पर मौजूद हैं। मुझे शर्म आ रही है, मैं ये बहुत गर्व के साथ मैं ये सब बातें आपको नहीं बता रही हूँ, लेकिन मैं ऐसी शुतुरमुर्ग भी नहीं बनना चाहती कि जो एक रेत में अपना सर गड़ा के मैं समझूं कि बाहर सब कुछ अच्छा है। तो ये जरूरी है समझना कि व्हाट वी आर फेस्ड विद। इसके अलावा देश बचा गए नाथुराम, गांधी जी के बारे में तमाम अनाप शनाप बातें वो मैं नहीं कहूंगी यहाँ पर, उनकी औरतों के साथ उनकी तस्वीरें और उनके जो इर्द गिर्द जो औरतें रहती थी उनके पूरे चरित्र को लेकर जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं वो सब मैं यहाँ पर नहीं कहूंगी। खासकर दो उनके ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं, पहली बात तो कि वो प्रो मुस्लिम थे, और दूसरे महिलाओं से उनका जो सानिध्य और जो नजदीकी थी। इसके अलावा मैं ये देख रही थी कि यहाँ पर एक जोक है जो चल रहा है, और ये जोक ये देखिए, हाँ, तो ये जोक है कि गांधी जी एक मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, नाथू मेडिकल्स करके वो मेडिकल स्टोर है, जिसमें नाथुराम की तस्वीर के साथ कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, और वो कहता है बेटा एक गोली देना। नाथुराम कहता है अभी देता हूं अंकल। एंड दिस इज सपोज टू बी अ जोक, दिस इज बीइंग शेयर्ड बाय hundreds of people on social media. So just to give you an example, a sample of what we are faced with, ये गांधी जी के नाम पर हो रहा है। अब गांधी होने के क्या मायने हैं एक ऐसे शख्स के तौर पर जो मेरी पैदाइश से 10 साल पहले जिनकी हत्या कर दी गई, उनकी आइडियोलॉजी के क्या मायने हैं। मैं आपको बता सकती हूँ कि दुनिया में मैं कजाकिस्तान से लेकर, उज्बेकिस्तान से लेकर, अफगानिस्तान से लेकर, ईरान से लेकर, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका के अलग अलग वो हिस्से, वो स्टेट्स जहां बहुत कम लोग जानते हैं। जब मैं कहती हूँ कि मैं इंडिया से आई हूँ तो मुझसे कहा जाता है कि आप गांधी के देश से आई। यानी अभी बहुत चर्चा है उन दो लोगों के बारे में, दो गुजरातियों के बारे में जिनके गुजरात मॉडल को लेकर वो समझते हैं कि पूरी दुनिया को उन्होंने मॉडल दिया है। उन दो गुजरातियों के बारे में मुझे आज तक कभी किसी ने नहीं कहा कि आप उनके देश से आई हैं। मुझे सिर्फ एक गुजराती, वही गुजरात का मॉडल, उसी गुजराती का मॉडल जो सिर्फ भारत में नहीं बल्कि जहां जहां मैं सबसे ज्यादा मैंने देखा, मैंने कुछ महीने गुजारे जर्मनी में, और मैंने वहां देखा कि गांधी का नाम अक्सर लोग लिया करते हैं, और वहां दीवारों पर गांधी जी के कोट्स के पोस्टर लगे हुए हैं, बर्लिन में, म्यूनिक में, बॉन में,
हैम्बर्ग में, अलग अलग जो बड़े बड़े शहर है, और मैं आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज टू सी कि मेरे गांधी का, वो मेरे बापू हैं, मेरे गांधी को जर्मनी में सबसे ज्यादा याद किया जा रहा है, जो मैंने देखा। फिर मैंने ये रियलाइज किया कि जहां जहां हिटलर होते हैं वहां वहां गांधी की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। और इसीलिए आज हमारे देश में, भारत में गांधी की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आज हिटलर की आइडियोलॉजी, जो नथुराम गोडसे की आइडियोलॉजी है, वो सर चढ़ के बोल रही है। महात्मा गांधी को रिडिक्यूल किया जा रहा है, मॉक किया जा रहा है, मजाक का पात्र बनाया जा रहा है, उनकी पूरी जिंदगी पे सवाल उठाए जा रहे हैं। तो इसीलिए जहां हिटलर होते हैं वहां गांधी की जरूरत होती है। और इसीलिए आज मैं ये भी बताना चाह रही थी आपको कि जो नफरत का जो आलम है, इससे पहले कि हम ये देखें कि महात्मा गांधी ने किस तरह से, उनका व्हाट वाज हिज वे ऑफ लाइफ, व्हाट वाज हिज वे ऑफ फाइटिंग hatred, bigotry, divisive politics, तो हमें ये भी समझने की जरूरत है कि आज अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पर, मैंने आपको ट्रेंड्स के बारे में बताया, अब आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे आ जाइए। मैं बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से एक ऐसी इंडस्ट्री का हिस्सा हूं जो आज, मतलब मैं कहूंगी, भारत के संविधान, लोकतंत्र और गांधी जी की जो एक बार हत्या हुई थी, वो हर रोज गांधी की हत्या कर रहे हैं ये लोग। नेशनल टेलीविजन पर सबके सामने धड़ल्ले से, एक व्यक्ति नहीं बल्कि ये जो नफरती, जो ये हेट फिल्ड, बिगेटेड जो सोल्जर्स हैं, ये बाकायदा फौजी बन चुके हैं, ये उनकी पूरी सेनाएं हैं बाकायदा। और ये लोग अभी कैंपेन चला रहे हैं कि जो हिंदू फेस्टिवल्स हैं उसमें मुसलमानों को नहीं जाना चाहिए। और आपको लग रहा होगा कि शायद ये 2, 4, 6 कोई IT सेल के लोग होंगे, 10, 20, 50 होंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया में, टीवी चैनल्स पर कैंपेन चलाया जा रहा है कि कोई भी मुसलमान गरबा में, नवरात्रि के जो फंक्शन है, जो सेलिब्रेशन है, उनमें नजर नहीं आना चाहिए। और कैंपेन ये है कि अगर आपको गरबा में नाचना है तो आपको पूजा भी करनी होगी, यानी आप बिना पूजा किए हुए गरबा में नहीं जा सकते। हमारा ये कोई कोई ये नाचने का कार्यक्रम नहीं है, कोई नृत्य की सभा नहीं है। आप अगर जा रहे हैं तो पहली बात तो मुस्लिम लड़कों पे ये इल्जाम है कि आप वहां जाते हैं तो हिंदू लड़कियों को लुभाने के लिए वहां पे जाते हैं। यानी कोई भी जो एक कल्चर, एक कॉम्पोजिट कल्चर जो भारत का हुआ करता था, यानी सोचिए आपके कल को अगर अंजलि या मृदुला जी को या शबनम को बुलाया जाए कि किसी, आप इफ्तार में जाइए, या कहा जाए कि ईद के मौके पर आपको, मैं लेट्स से कि मैं आपको ईद डिनर पे बुलाऊं, तो आपसे एक्सपेक्टेशन में करूं कि पहले आप ईद की नमाज पढ़िए, फिर आपको ईद की सेवैयां मिलेंगी, या पहले आप रोजा रखिए और रोजा रख के नमाज पढ़िए, फिर मैं आपको इफ्तार दूंगी। मतलब इट इज एज रिडिक्युलस एज दिस। तो सीधे तौर पर ये सोचिए, आपकी जो मुस्लिम पुरुष की एक पूरी जो इमेज है, यंग मुस्लिम मैन, उनकी इमेज ये है कि ये क्रिमिनल्स हैं, ये रेपिस्ट हैं, ये बाबर की औलाद। और यहाँ तक हद ये है कि इवन महिलाओं तक को नहीं बख्शा जा रहा है। पिछले लगातार 3-4 दिनों से एक मेरा प्राइवेट वीडियो, आई डोंट नो कहाँ से वो लीक हुआ, कैसे इन लोगों को मिला, फोन हैकिंग हो रही है, आई डोंट नो क्या है, वहां से वो उठा के मेरा प्राइवेट वीडियो सोशल मीडिया पे लीक किया गया है। उसमें मेरे परिवार की, मैं कहूंगी यहाँ तक कि उनकी सिक्योरिटी को भी दे आर जेपरडाइजिंग। आई डोंट वांट टू गिव हियर मोर डिटेल्स, और मैं और ज्यादा उनको अनसेफ कर दूं, इसलिए मैं इससे ज्यादा डिटेल्स नहीं देना चाहती। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जो सच बोलने की जो कीमत है, और जो इतना बड़ा ये मेजॉरिटेरियन हेट प्रोजेक्ट है, उसको एक छोटी अपनी कैपेसिटी में मैं काउंटर करने की कोशिश करती हूँ। इसलिए नहीं कि मैं बहुत बड़ी महात्मा हूँ कोई, इसलिए नहीं कि मुझे I am a superior human. I do it for very selfish purposes. I do it for the world that I want to live in, the world that was given to me, that I inherited, and the world that I will leave for my future generations. तो मैं इस दुनिया को और अपने आसपास की दुनिया का मैं दावा नहीं कर सकती, लेकिन आसपास की जो माहौल है उसे बेहतर बनाने की हर दम हर पल मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि इसी दुनिया में मुझे रहना है, इसी दुनिया में मेरे परिवार को रहना है, इसी दुनिया में मेरे भविष्य की जनरेशन को रहना है। तो ये बहुत ही सेल्फिश पर्पस से मैं करती हूँ। तो उसकी कीमत आप ये देखिए कि प्राइवेट वीडियोस मेरे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लाखों की तादाद में लोग देख रहे हैं, मॉक कर रहे हैं, रिडिक्यूल कर रहे हैं, थ्रेटन कर रहे हैं, माइनर की सिक्योरिटी को, सेफ्टी को खतरे में डाल रहे हैं। और मैं खुल के बोल भी नहीं सकती हूँ। आप मुझे देखिए कि मेरे जो अंदर, मतलब मैं कहूंगी कि ज्यादातर मेरी बदकिस्मती है कि जो पूरा जो कीचड़ है, ये जो दलदल है नफरत का, मेजॉरिटेरियनिज्म का, हिंसा का, मुझे रोज इस दलदल में उतरना पड़ता है।
मुझे रोज जानना पड़ता है कि हो क्या रहा है, मुझे कहना क्या है, क्योंकि जब तक मुझे ताजा हालात का अंदाजा नहीं होगा शायद आई वुडंट बी एबल टू कमेंट ऑन द करंट अफेयर्स। उसकी कीमत यह है कि पूरे तरीके से न सिर्फ कि मैं अपने ऊपर झेल लेती हूँ, कोई भी आप मेरे खिलाफ कैंपेन चलाइए, लेकिन मेरे परिवार और माइनर्स के खिलाफ जिस तरह का कैंपेन चल रहा है, मुझे लगता है कि मुझे अब तक लगता था कि मैंने आई हैव डेवलप्ड सम काइंड ऑफ अ थिक स्किन, but they have gone so low and so deep into it that it hurts me so bad. I have been silently dying for the last 3 days. I feel so helpless. I don't know. I don't want to go to the police. मुझे पता है कि उनका रवैया क्या होगा. I don't want to go to any government or any authority. मुझे पता है which side they are. तो ये इतने पावरफुल लोग हैं that you feel so powerless that you don't know what to do anymore. And then ये मतलब आपको लग रहा होगा आपने मुझे यहाँ प्रोफेशनल की तरह बुलाया है, and I'm talking about my personal stuff because personal is professional, professional is personal. That line was blurred long ago. And I don't know how to, I mean, जर्नलिज्म की क्लास में हमें पढ़ाया गया था, बताया गया था कि आपको अपने जो सब्जेक्ट है उससे एक ऑब्जेक्टिव दूरी बरकरार रखनी है। अब आप ये सोचिए कि जब मेरी जैसी शख्सियत कोई जाती है और मैं बात करती हूँ और मेरे तरह मेरी पूरी पर्सनल लाइफ इज एट स्टेक, इसमें पर्सनल कहाँ है, प्रोफेशनल कहाँ है, कौन सी लाइन मैं ड्रॉ करूं जब सारी लक्ष्मण रेखाएं लांघ दी गई हैं। तो इसलिए इतनी बड़ी ये ताकत है जिसमें पूरे के पूरे एक समुदाय को एक दानव की तरह, एक दैत्य की तरह पेश किया गया है। हर रोज मैं सुनती हूँ कि बाबर की औलाद, मैं रोज सुनती हूँ तुम्हें गौरी लंकेश बना देंगे, मैं रोज सुनती हूँ किस तरह की ग्राफिक डिटेल में वो बताते हैं कि तुम्हारे साथ वो क्या करना चाहते हैं। उस सब के बावजूद सुबह रोज मैं उठती हूँ और एक नया प्लेज मैं करती हूँ कि नहीं, शायद मेरी आवाज की जरूरत है। शायद यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि ये 100-150 जो जिद्दी लोग हैं, इन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि आइए अपनी बात कही, और यहाँ मुझे महसूस होता है जैसे कि मैं अपने परिवार के साथ बैठी हुई हूँ। तो अब ये एक तरफ ये मेजॉरिटेरियन हेट है, दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि आपको जरूरत क्या है इस तरह के गरबा वगैरह में जाने की, आपको जरूरत क्या है उनके फेस्टिवल्स में जाने की, आप ये हराम काम क्यों कर रही हैं, आपको क्या जरूरत है शिर्क करने की। यानी आप ये सोचिए कि एंड आई डू अंडरस्टैंड, मतलब एक तरफ कंजर्वेटिव तबका है, वो झुंड है मुसलमानों का जिनकी एक राय है कि ये नहीं करना चाहिए इस तरह से पार्टिसिपेट, लेकिन उसमें एक तबका वो भी है जो पार्टिसिपेट करता रहा है अपने दोस्तों के साथ, जैसे उनके दुख में शरीक होता है, उनके सुख में भी शरीक होना चाहता है। बट दिस होल रिएक्शन कम्स ऑल्सो फ्रॉम अ प्लेस ऑफ हर्ट, प्लेस ऑफ डिसग्रेस, जहां आपकी डिग्निटी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। फिर मेरे जैसे लोगों पे लोग गुस्सा होते हैं कि यू आर अ पब्लिक फिगर एंड यू आर ब्रिंगिंग दिस डिसग्रेस एंड इंसल्ट टू अस बाय डूइंग ऑल ऑफ दिस, क्योंकि वो वक्त नहीं है, ये दौर नहीं है। लेकिन मैं उन्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि एक बहुत ही टॉलरेंट और इतने खूबसूरत मजहब को हम एक मुट्ठी भर लोगों को हाईजैक नहीं करने देना चाहिए, चाहे इस तरफ के हों या उस तरफ के हों। इस वक्त सिर्फ फर्क इतना है कि इस तरफ के जो लोग हैं इनके पास स्टेट पावर है, उधर स्टेट पावर नहीं है। सो दे आर ऑल पावरफुल, दे हैव द होल स्टेट मशीनरी to back and support the ideology that they want to publicize and propagate. तो फिर मुझे इस सब के दौरान जब ये पूरा अंधेरा छा जाता है और जैसे मैंने कहा कि इस कीचड़ और दलदल में जब मैं उतरती हूँ तो मुझे याद आता है कि गांधी जी के दौर में शायद इससे भी बदतरीन हालात रहे होंगे। तब जब वो लड़ रहे थे वो भी बहुत ताकतवर लोग थे और ऐसा लगता नहीं था कि वो कभी हमारी धरती को छोड़ के जाएंगे, कभी लगता नहीं था कि हम एक आजाद फिजा में सांस ले पाएंगे। तो फिर जब उन्होंने लड़ा, जबकि अब से ज्यादा मुश्किल हालात थे, तो हम अभी भी हमें लड़ना होगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम एक दिन जीत जाएंगे, हमारे पास कोई गारंटी है। हमें यहाँ इस पूरी मीटिंग में, इस महफिल के बाद हमारा कोई एक डिक्लेरेशन हम जारी करेंगे कि देखिए हमने ये जंग जीत ली। हम इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि लड़ना जरूरी है। हम इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि इतिहास से याद रखेगा कि हम हारे या जीते वो बाद में लिखा जाएगा, लेकिन ये जरूर याद रखा जाएगा कि कुछ लोग ऐसे थे जो इस अंधेरे में, चाहे वो सूरज नहीं थे, वो चांद नहीं थे, लेकिन वो दियों की तरह जल रहे थे। और दिए को भी खुद जलना पड़ता है। जब रोशनी वो देता है, जब मोमबत्ती रोशनी देती है, दिया रोशनी देता है, तो उसे खुद जलना पड़ता है। आज हमें शायद खुद जल के, खुद इस दलदल में उतर के, अपनी पर्सनल हर तरह की सेफ्टी को दांव पे लगा के शायद इस जंग को बरकरार रखना है, क्योंकि हमें गांधी जिंदाबाद को बरकरार रखना है, नथुराम को हराना है, हमें हिटलर को हराना है। इसलिए गांधी को जिंदा रखना है। गांधी की आइडियोलॉजी अब नहीं, बल्कि मैं कहूंगी आज से 100 साल बाद भी जर्मनी में, भारत में, हर जगह पे जहां जहां नफरत होगी, जहां जहां हिंसा होगी, जहां जहां बंटवारा होगा, जहां जहां मजहब और पहचान के नाम पर राजनीति की जाएगी, लोगों को सताया जाएगा, वहां गांधी याद आएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया अरफा। और हर बार जब आप अपनी बात रखती हैं तो बिल्कुल दिल से रखती हैं आप अपनी बात, मतलब क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर केवल जब हम चर्चा करते हैं तो जो हम बातें उठा रहे हैं वो इतनी बुनियादी हैं कि जैसे आपने कहा कि जो बाउंड्रीज हैं पर्सनल की, प्रोफेशनल की और पॉलिटिकल की, वो बाउंड्रीज का कोई मायने नहीं रह जाता। सो थैंक यू सो वेरी मच Arfa for speaking straight from the heart. And I think that, to very briefly translate some of the things that you said, because they were said so much from the heart, there is really no, these can't be translated in words easily. But I think the important thing is that you said that this campaign and campaigns like this, the Nafrat Chodo Samvidhan Bachao campaigns, are really campaigns to remember, to stubbornly say we will not forget. We will not forget the values, we will not forget the principles that this entire struggle has been about. Even the independence struggle was not without its values and principles. We did not want a meaningless azadi or a meaningless freedom. There was a whole set of values that we fought with at the time of independence, and Mahatma Gandhi in many ways embodied those. And this entire set of people who continue to struggle, who continued to remain optimistic and fight against forces of hate and divisiveness, are people who are stubborn people and who will speak out come what may. You told us what the situation is on social media, and actually, all of us have some social media that we are tuned into. We just need to go there to see the kind of messages that are circulating today. The Har Har Nathuram, Godse Zindabad kind of messages that are floating around, messaging that is happening, the kind of poison that is being spewed against Mahatma Gandhi. And you said that, it pains you because when we look internationally and from any country in the world, we see how revered he is, actually, how respected and how fondly his values are remembered. And you said that even in Germany, how fondly they remember him, the land of Hitler. And you said probably it's because where there is fascism, where there are these forces of repression and hate, I think Gandhi becomes even more relevant. And therefore today, when we do this discussion, we start these campaigns, we initiate these webinars, really we are remembering him at a time when globally and especially in our country, there is a climate of hate and fear. And therefore, Gandhi and his principles become more relevant and important than ever before. But you said this is not just happening in social media, it's happening in the mainstream media, unabashedly and blatantly, where anytime you flick a channel, what you are seeing is that these soldiers of hate, and really that is true, there is no other way to describe them. A lot of the anchors who are sitting on mainstream, who are peddling hate, and every day they are raking up issues that further divide, issues that actually deepen the fault lines in our society. These are not new fault lines. Mridula talked before you about the partition, about how Gandhi himself said that I cannot start a movement unless there is something stirring in the hearts of people. And today again, we are seeing that there is a very, very systematic attempt to actually stir up that hate and that division in people's hearts. And you said that
even religious festivals are being politicized. They are being made instruments of hate, where one community, not being allowed to even participate in the festivals of another community has become an issue of debate and is being encouraged. People are being called names. There is a stereotyping of communities, especially the Muslim community, where the men are painted as criminals, rapists, and there is, we are alluding to some very old systems to things to kind of bring that up, and even women are not being spared, and you very, very, very importantly, I feel, shared with us your own tribulations, the kind of harassment and intimidation that someone like you is being put through. And I think that it's very important that you share this, Arfa, because you see, the important thing is that this happens, this is happening, and it has many layers. There is the layer of religions, there's the layer of patriarchy. Everything is being used, especially it's being heaped upon on women, Muslim women, who dare to speak. And these are all ways to intimidate and all ways to cause a chilling effect, because these forces don't want people, and especially women, to speak up. So we've seen this repeatedly. We've seen this through the Bully Bhai and other episodes. We are now seeing this with your personal leaked on social media, causing you so much harassment and pain. And you're sharing with us your sense of vulnerability and helplessness that is so natural, but I think that is really so much a part of the arsenal that is being deployed today to make sure that people don't speak up. And anyone who dares to speak up knows that this is what they will have to go through. And I think, Arfa, we salute the sense of resilience, the sense of justice with which you work, because despite all of this, you are talking about and reminding us of our syncretic culture, of the Ganga, Jamuna, Parampara and Tehzeeb that we have all actually grown up with and learned to is a part of our culture and part of our ethos. And I think you ended with a very powerful message, which is really ultimately the message of hope and optimism that all of us need to imbibe and take forward with us. Because what you said is that today it might seem that forces of hate, fascist forces, have tremendous, immense power and resources, and we might feel helpless. But then this is exactly the purpose of some of these discussions and debates, that this is what happened even at the time of Gandhi, even at the time of the freedom movement, which we are really talking about today. Because even at that time, the enemy seemed really powerful and unsurmountable. But people struggled and they finally prevailed and they finally won that struggle. But you said something even deeper, that it's not just to win someday, but it's to struggle is important, because this struggle will be remembered. It will be remembered that people struggled at a time when things were so dark, and at a time when hate was being spewed and that venom, this poison, was being spread. Thank you so very much for joining us, and solidarity with you and your work, and more power to you, Arfa. Thank you. I'm now going to move. We have Nazneen with us. Nazneen to sing a song. Yes, we have Nazneen with us to sing a song. Amrita, can we please unmute Nazneen? नाज़नीन, आप अपने आप को अनम्यूट कर ले, मैंने आपको को-होस्ट बनाया है। नाज़नीन, यदि आप मेरे को सुन पा रहे तो अपने आप को को-होस्ट
आपको को-होस्ट मैंने बनाया है, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। We also have a recording by the Avan project of Vaishnu Ajanto. If you like, I could play that as well. Yes, please. Actually, Amrita, why don't we take a couple of questions at this time? There are a few questions that I can see. There is a question that Mirza Yusra Beg wants to ask Justice Lokur. So Justice Lokur, if you could please unmute yourself. The question is, due to the diversity in India and looking at everyone's perspective, something which is hate or bad for me might be good for another individual. How does our constitution draw a line between good and bad apart from content, intent, and impact? If you could respond. Yes, thank you for that question. You see, our constitution does not draw a line in that sense. The constitution is a model of governance, and really it is the authorities who have to take a call on this. So if you say something which is hurtful, it is, for the person who is hurt by your comment to maybe file a complaint against you with the police, and then the police to analyze it and see whether the formula that has been laid down by the Supreme Court of content, intent, and harm is satisfied. And then eventually, if the police feels that way, the police may be wrong in their assessment. It is for the court to decide what is really the content, intent, and harm of that statement. But really, the point is not what the Constitution says. The point really is what do we as people feel. That is why there is a need for this dialogue. There is a need for discussion. You're right. Somebody may say something which is innocuous, but it may hurt somebody else. How do you prevent that? You can't prevent it in theoretically. But when you discuss, debate, and have a dialogue on this, then you will realize that there are certain things which should or should not be said. For example, there are some words which are supposed to be politically incorrect, right? How did that happen? It happened because of this dialogue that, yes, if you use this word, which is politically incorrect in the United States, for example, it's going to hurt some people, okay? So that can happen only through a dialogue, which is, I think, what is missing. And, dissent is an important part of dialogue. You may disagree with a formulation, but you have a right to do so. Okay. I hope that answers your question. जी, बहुत शुक्रिया जस्टिस लोकुर, क्योंकि मेरे ख्याल से आपने जो वो नुआंस है उसको आपने उसकी ओर इशारा किया। अगर हम हर चीज को, जो ऐसी चीज है जो मैं कहूं और किसी और को बुरी लगे, अगर हम हर ऐसी चीज को क्रिमिनलाइज करने लगे या रोकने लगे, फिर तो फ्री स्पीच ही खत्म हो जाएगी। लेकिन वो क्या ऐसे तमाम चीजें हैं जहां पर हम एक समाज, एक सोसाइटी के तौर पर सोचते हैं कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और ये केवल संविधान की बात नहीं है, ये बात है हम किस तरीके के समाज में जीना चाहते हैं। और इसीलिए जरूरत है, आपने कहा, इस तरीके के संवाद की। लोग बातचीत करें, सोचें, संवाद करें। और यही कारण है कि ये वेबिनार सीरीज भी क्यूरेट की जा रही हैं, जिससे कि जो यात्राएं चल रही हैं जमीन पर, लोग चलेंगे, बातचीत करेंगे, नफरत छोड़ो संविधान बचाओ अभियान के तहत, उसके अंदर जो मूल्य, जो मौलिक बातें हैं और जो इस तरीके की नुआंस्ड भी डिस्कशंस है, उसके लिए भी स्पेस बनती रहे। क्योंकि ये सारी चीजें हम नहीं सोच सकते। मृदुला ने कहा था कि जो संविधान है वो कहीं आसमान से नहीं आया, वो तो लोगों के स्ट्रगल से ही
आया है, वहीं से वी द पीपल ने अपने आप को ये संविधान दिया है। पर आपने जो बात कही उससे मुझे ये लगा कि जो हम कहते हैं कि लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ये एक जिंदा संविधान है, उसका मतलब यही है कि सब कुछ उसमें लिखा चाहे नहीं गया हो, पर उसमें जो और भी आगे सोचने की चीजें हैं उस सोच को भी बढ़ाते रहने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस लोकुर। अभी हमारे पास एक दो सवाल और भी हैं, लेकिन हमारे साथ आह्वान प्रोजेक्ट से Anjali, they were just saying thanks in the chat box. Their Oh, connection is still unstable, so they're saying they connection prefer. unstable. And Mridula is no longer in the room. We don't have her. Do we have Arfa with us? Yes, Yes. we do. I think we have another question also, which I would request Arfa to answer. Can we have that up on the screen, Amrita, if it's possible? Yeah, I'm just searching. I think it's disappeared in the chat box. Yes, I remember there was a question which. Lots of messages of solidarity for Arfa in the chat box, and I think that's where we lost the question at some point. Yes. But somebody is suggesting that why don't we have groups of hundreds of us, like-minded people, and perhaps from there think of strategies on how this could be defeated. So perhaps Arfa could comment on that. On the need for collective action. Right. I think it is important, the collective actions, but I do feel very strongly that it all starts from families. And it actually begins and starts from WhatsApp groups, one father, one uncle, one auntie, one cousin at a time. Even if we are able to handle it that way, we will be able to win half the battle that we are faced with. So I do feel there is a need for collectives, and there is no dearth. I do keep saying that whether it's Hindus or Muslims or Christians, the smallest minority in India these days are the liberals, and these are the very liberals. Otherwise, all of the people, they are comfortably placed. Whether you talk about conservative Hindus or Muslims or Christians, for that matter, it suits them. Sometimes when you see these Hindu extremists talking about kind of a closed culture and not really interacting with each other, and you see the Islamists agreeing with them, even Christians coming in and joining hands with them, and you feel they all belong to the same world. But at the same time, I would say it is the responsibility of the liberals, of democratic-minded people, who should counter it within their families. For people who are professionals like me, of course, my job is to go public with what I say. But for most people, this opportunity is not there. I feel, yes, there is a space, time, and we should always do these collective things. This also kind of helps in stimulating our thought process, also giving us ideas on what's happening and how to fight it. And you feel a sense of solidarity that you are not alone in this. But at the same time, I would say, since it has gone down so deep into our RWAs, the residential welfare societies, into families, family weddings, I feel now the need is to counter it at a very personal level, at a family level. बहुत बहुत शुक्रिया अरफा। और आपने सही कहा कि ये बिल्कुल हमारे घर तक पहुंच गया है, हमारे दरवाजे तक पहुंच गई है ये बात। और ये व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जिस तरीके के मैसेजेस प्रोलिफरेट हो रहे हैं, एक एक बच्चा, एक बुजुर्ग जो देख रहा है, शेयर कर रहे हैं, जो इस तरीके के हेट के मैसेजेस हैं, उसको काउंटर करने की जरूरत है। और इस तरीके की जो बातें हैं, चर्चाएं हैं, ये हम सब लोगों को ऊर्जा भी देती हैं, साथ ही में सोचने का मौका देती हैं कि क्या मुमकिन है, हम क्या कर सकते हैं। आह्वान प्रोजेक्ट हमारे साथ जुड़े हैं। वेदी पाखी, आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई गाना शेयर करना चाहेंगे, आप प्लीज करें अगर आपका इंटरनेट स्टेबल है तो।
हमारे साथ रूथ मनोरमा और वृंदा ग्रोवर ने जुड़ना था. Unfortunately, Ruth has had a medical emergency, and in Vrinda's family there has been a medical emergency. We will have both of them in our subsequent webinars. We've had a whole host of very, very inspiring, eminent speakers today, but the two of them have not been able to join. We are sorry about that due to their personal reasons. Ahvan Project, if you may I request you, Vedi Paki, to please unmute yourself if you can, and if you wish to say something or sing something. Hello, and thank you so much for having us, because this is the hope that keeps us going, but also the conversation that keeps us on our toes, which is so important right now. We are very sorry that today we have internet, but it's so unreliable that we have had to resort to these videos. But we are very hopeful to be more present and with all of you, but also physically offline to be with all of you soon. And thank you so much. Would you like to hum a few sentences, any song before we lose your internet connection? Please do that if you would like. There is one song. It's a little bit different in its approach, because this is a safe space. I will try to sing it. I hope it gets across. I'm not switching on my video so that there is more possibility. It's called Maya Manka, and हाँ, I think गाने के ही जरिए कह पाना आसान रहेगा. माया मन का अंधेरे घंटा सबका बड़ा है हरी प्रजा और जनता डरिया सांसद में अब जान तो बोलो दादी कौन बचाए जान वो देखो दादी राजा लगाए माया मन का अंधेरे घंटा सबका बड़ा क्यों है भिखारी प्रजा जनता डरिया सांसद में अब ओ देखो दादी राजा लगाए तो बोलो दादी कौन बनाए मेरी निगाह गिरी दूजे पे
बहुत शुक्रिया। आप इसके बारे में 2 शब्द बोलना चाहेंगे, गाने के बारे में, बोल के बारे में? जी जी। तो हमने हम तो मैं तो अपने आप को बहुत छोटी बच्ची की तरह देख पाती हूँ। तो मैं जानती हूँ कि जब पढ़ रहे थे, जब स्कूल में थे, तो बहुत सारी अच्छी बातें ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ लव हैपेंड। और साथ ही साथ हमने हिस्ट्री भी पढ़ी और ये भी समझा कि क्या गलतियां हम कर चुके हैं। तो if you look at it from a young person's point of view, it is surprising and heartbreaking where we are today. And a couple of years ago, the realization of where we stand, and while this is so important, when we have these conversations, we learn so much and we find so much faith and hope to start. But it's so difficult sometimes to keep calm and take it all in and then move forward. It becomes so difficult, and sometimes it's so इतना गुस्सा आता है, और फिर it's a process, and of course you deal with your anger and try to work towards betterment with hope, with love. But sometimes I realize that love is so much more than coddling and saying good things, and so much also about drawing boundaries and putting your foot down. And that's where this song came from, the disbelief, but also the hope that collectively we will work on and get rid of this approach of entire lives are being approached and lived with hate, and hopefully together we'll come out of it. That's where this song came from.
and I'm very very glad कि हम लोग ये गाना आप लोगों के साथ बांट सके. हाँ, thank you. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you very much, Vedi and Paki. And I think that nothing expresses our emotions better, our thoughts better than music. Nothing energizes us more than music. So thank you for sharing your songs with us today. And we wish there was less technical problems, but at the same time, we had your video, which we were able to share and see today. So आपको जिंदाबाद. और मुझे लगता है कि आज का जो हमारा सत्र है, हम आज इसे समाप्त करते हैं. अभी ये जो आज का वेबिनार है, ढेर सारी बातें हुई हैं किस तरीके से हमें जो नफरत है उसे हटाना है. क्या हमारी सीख है महात्मा गांधी के जीवन से, उनकी फिलॉसफी से, जिसे हमें अपनाने की जरूरत है. हम किस जुडिशरी में हम और लीगल फ्रेमवर्क में हम आज अपने आप को देखते हैं, इस पूरी क्या परिप्रेक्ष्य है, इन सब चीजों के ऊपर मेरे ख्याल से बहुत ही शानदार चर्चा हुई. और सभी स्पीकर्स ने हमारे साथ अपने दिल से बात रखी. I thank all the speakers today for sharing with us their thoughts so eloquently and so comprehensively on a range of issues which we need to understand and grapple with when we pledge to defeat hate and we pledge to defend the Constitution. So we've talked today from the whole issue of the legal framework to what was Gandhi's values, his practice, his ideology, to what we are seeing on the ground in the media, social and mainstream. And we've taken forward many of these conversations which will guide us in creating a society, in creating a country and a world finally, which we really want to inhabit. And like we heard our speaker say, that this is very selfish at one level. It is about us wanting to create a world of love, a world that we want to inhabit and that we want to leave behind. Just like Mahatma Gandhi, and his life was his message. And today on Gandhi Jayanti, thank you so much for joining us, for taking the time. Of course, thank you to the speakers, but also to everybody, to everyone who joined in this discussion to listen and ask questions. Thank you very much. Sabhi ko zindabad.
सकल लोक मां सहुने वंदे दिन रात करे केणी रे वाच काश मन निश्चल राखे वाच काछ मन निश्चल राखे धन धन जननी तेरी रे वैष्णव जन तो तेरे कहिए मोह माया व्यापे नहीं जेने निर्णय राग जिना मन मारे राम नाम सुन ताली लागी राम नाम सुन ताली लागी सकल तीरथ तेना मन मारे वैष्णव जन तो तेरे कहिए लोभी रे कपट रहित छे काम क्रोध ने मारा रे बड़े नर सैयो तेनु दर्शन करता बड़े नर सैयो तेनु दर्शन करता कुल एको तेन तार्या रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई राने रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे वैष्णव जन तो तेरे कहिए Thank you. We're now shutting this Zoom room.